If there are special children and there are children who only feel the need to be special. So, there are all kinds of children. And for us, there are no stars. They all shine brightly in the ways. We just have to discover what that way is. And I hope that it worked out. And I could not find it. So, the teacher herself volunteered. And just leave this to me. थोड़ा सा इंग्लिश में मार्क्स पढ़े, थोड़ा सोशल साइंस में मार्क्स पढ़े, लेकिन फिर भी वो जस्ट अबाउट पास करने लगा इन दो सब्जेक्ट्स में, हिंदी में 0 था और मैथ्स में हमको लगा. तो how does a child achieve this? Achieve this and neglect this? Obviously, the one thought that came to my mind is the child is wired to. When I say wired, it means his brain is his development of different parts of the brain is developed differently. So that was a very, I was talking about the role of parents. Sometimes we use some very special stuff. हमारे स्कूल में ही एक बच्चे को टेस्ट और पेरेंट एक्सेप्ट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में इवेंचुअली पेरेंट फिर हम कुछ नहीं कर सकते. I'm not in class 9 because he was open and honest. He was high functioning, even at AST. He was doing very well in his academics. Socially, he was not able to maintain social relationships or mental health. And the mother said, that's all right, he's just a loner. It's okay to be a loner. If you're unable to face somebody and look somebody in the eye, and you're always looking down at that, it's going to become a problem in the future. So those are the issues that bother us. And class 9 is the challenge. And then he realized that he had someone. Somebody didn't have it living करते हैं. You are labeling my child. We had reasons, strong reasons to believe that that was not the case because we have experienced special. We have occupation. We have speech therapists. We have speech therapists. So we were quite confident. And I think it's parents and as teachers in many schools, and we face this in our schools from the beginning. It's very difficult for a teacher to manage 30-35 students in class. Similarly, if you have a 100 child, because they are not being themselves, they're distracted from listening about the teacher. So they need to be taught and sensitized. ये जो advocacy की बात करते हैं, तो हमने बहुत ट्रेनिंग करी, बहुत हैंड होल्डिंग करी. वहां पे हमें लगता था कि कुछ भी क्लासरूम के अंदर वेलकम होने वाला है, फट से वहां पे हमारे स्पेशल एजुकेटर और स्कूल में हमारे स्पेशल एजुकेटर्स ढूंढे गए, बाकी कहीं भी बिना टाइम वो उस जगह. अफसोस की बात यह है कि मेट्रो सिटीज beyond the metro cities, there is no understanding of what is learning for स्पेशल एजुकेटर. मैंने सीबीएसई के बहुत सारे इंस्पेक्शंस किए हैं. एक बार मैंने एक इंस्पेक्शन की तो उसमें मैंडेटेड है कि चलिए आप इंस्पेक्शन. तो मैंने पूछा कि उनके काउंसलर
It was very evident that she was not advanced. So I said, आप कहाँ रहते हैं काउंसलिंग करो कहते हैं नहीं स्टाफ रूम में बताइए से counseling is very confidential. So the metros is very little awareness and understanding. Social educator की बात तो छोड़ो वो टीचर से डेवलप करवा लेते हैं and she was an English teacher of English teachers. So one of the important awareness जो से I think you may have seen that movie. You see that? What is the essence of that movie? And what really good. Anyway, share your thoughts if maybe I don't know. We can discuss. What was the essence of that? Have insight with your difficulties also. You have insight, absolutely. And I think if you have not your family, because it was the wife who supported. And I have a friend who's going to this, and she's very as being loved. She's very well spoken. She has a good name in Bangalore. She's doing a wonderful bakery business. But she doesn't, she shies away from talking about. So her mother does the market. So I think, and I have attended, have you heard of the mother? So pretty old mother. Every year I attend a function. And the best of the function world people come. The best designers come there because Sunil Sethi who was the head of the FCCI, he is her cousin. He knows. And those designers want children with special needs. So you have to give dignity to artists. And as was rightly said, it's not the time for doing it just a fashion. It is a right. हम ये बच्चे को इधर हमने अब ये आपकी जिम्मेदारी है. I would not find a person who could help with a visually impaired. So ढूंढते काफी करना. I must tell you, as far as rights is concerned, I got a letter from, I think it's under the Ministry of Social Justice. So once in a letter, this bच्चे के लिए give me a moment for this. So parents are responsibility. It's a wonderful responsibility. And we said because we want every child and see even the underactive, ASD, visually all of them have a certain skill which they can blossom. Fortunately, in today's world, careers are changing. Everything has become very career. So if you visually see, the market के बारे में there's been singing on stage, there's been singing all the way up to Bollywood. So every person has their own ability and what is the potential that we want to. Now, we're talking about brain-based learning. I want to share a story. I've often thought that why is physiology not taught a little more in the classes? At least the physiology of the brain has function. And we look at this is just a very simple diagram of the brain, and you look at the function that's doing everything relating to learning and behavior. So if we don't understand the brain, how do we understand things?
So you all must learn about it. There's a wonderful book. It's called Brain Basics. So read that book. It's available on the other book I would love to recommend any other book is Lives Dear Leaves in Search of Self. Lives is the name of the world in search of self. A child who was able to be severely autistic, but he was a brilliant child. He was just autistic because he did not get the genuine attention and love of his parents. He was a very successful parent, extremely neglected child, and now he was able to be autistic. Then he was taken into therapy, and then he lost all his skills. He was very young. So we have to really understand the reason of the problem. It's not necessarily it could be a brain dysfunction or a neurological problem. So these two books. And the third, of course, is my favorite book called Smart Moves. Learning is not all in the head. When we're talking about the brain, it's a whole body learning. It talks about how movement helps the brain, because what you can't see here is the right and the left brain. Into these two, it's a small tissue, portion of tissue called the, anybody knows? Corpus callosum. Very good. So that tissue gets activated on the jaw active, that's the right word. So both sides of the brain get active. And that's what we want. Whole brain learning. Brain should be active. So what we do in our units, we do everybody, pre-nursery, nursery, PG, class, to translate, we make them do these two exercises, which you can do standing, place in the classroom. It gets them moving. And of course, the synapses, they need to have a vast transmitting system. So the synaptic impulses get it. So we ask them to do so these are some of the practices. But it's been a good period showing some of these. There's a lot we can do traveling almost 6 schools over. We are almost in our management for numbers and the teachers and the parents. Thank you very much for making very important. Thank you so much, Regina. And मैंने तो मीटिंग की सिर्फ आपके विचार नहीं थे, इस विचार में बहुत सारे कुछ चीज छिपे हुए थे और हमारे एक्सपीरियंस में हमारे साथ तो really and for friends and some of the but it's a disability and another class. So it's in showing or then we go for the experience actually. So much आज ये लोग वही से पूछने के लिए का हमारी विनोदी कल्चर का एक और भी एस्पेक्ट रहा कि हमारे पास कोई 20-25 मिनट विनोदी कोई बता क्यों पर इंस्ट्रूमेंट भी होता है मुझे रोक तारीख तो लेकिन सब शायद शायद बहुत ही लोग चलो तो मैं इसके लिए अपने आप को सोचने में सोचता हूँ इस के साथ संसार है इसमें सब तरह के अनुभव होते हैं तो के लिए विकास के
एक बहुत बड़ी सामाजिक जरूरत को पूरा करने की दिशा में एक कदम है, एक मूवमेंट है, और उसके लिए सभी को मतलब को साथ होगा। आपके सब्जेक्ट के ऊपर मुझे कोई पकड़ नहीं, लेकिन कुछ जो कुछ सुना है, देखा है, मंदिर में आते जाते सुना को समझा है, पहले ही बाद में आने जाने से कुछ कुछ बातें समझी हैं। तो मैं समझता हूँ अपने खुद के 40 साल के अनुभव के आधार पे कि ये कन्वर्जेंस का युग है। और आप उस कन्वर्जेंस के कई आयाम के एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि आज भी हम देखें तो एक जो स्पेशल एजुकेटर्स का जो करियर प्लान लेके आप लोग यहाँ सब आते हैं, और आज जो हम आए हैं भवन में मेडिकल फैकल्टी के साथ एक और साइंटिफिक सब्जेक्ट के लिए ही एक 2.5 दिन 3 दिन का एक कार्यक्रम रखा गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कन्वर्जेंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, जैसा कि ऋषि मैम ने बताया कि ये केवल लव अफेक्शन के साथ जो भी अगर अदर इंटरप्रिटेशंस की जरूरत होती है, उसकी कन्वर्जेंस से ही अच्छे आउटकम होंगे। एक और बात डॉक्टर पंकज कुमार ने पिकअप की थी, जो मैं अपने कार्य क्षेत्र में रोज देखता हूँ, और संबंधित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम पे से कितने लोग चैट जीपीटी यूज करना शुरू कर दें? तो सभी कुछ लोग हैं, हम ज्यादा बेटर होंगे कि उन्हें, लेकिन ये जो एकदम से पिछले 5 साल से तो काफी बातचीत चल रही थी, लेकिन पिछले 1 साल में, आज करीब करीब 1 साल पूरा हो गया है, पिछले नवंबर में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था। तो पिछले 1 साल में ये अभी टॉपिक बन गए का पार्ट बनने जा रहा है। लेकिन इसके कई ऐसे चीजें हैं जिसके ऊपर मैं कंटेक्स्ट के पॉइंट पे बोल रहा हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ कन्वर्स नहीं हो तो गलत भी कर सकते हैं। और इसके काफी ऐसे परिणाम भी हो सकते हैं जिसके लिए हमें आगाह रहने की आवश्यकता है। और अच्छी बात यह है कि लगभग सभी इंक्लूडिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा आगे लेके प्रमोट करके आए हैं, including वो सब लोगों ने इस चीज को हाईलाइट किया हुआ है कि इसका यूजेस हैज टू बी वेरी केयरफुली एंड वेरी डिफरेंटली हैंडल्ड। और वो सब तभी हो सकता है जब हम ह्यूमन इंटेलिजेंस रखें। तो हम आज तक के बिजनेस में जो भी सॉल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लाते हैं, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को नहीं करने का। तो ये जो कन्वर्जेंस के पॉइंट्स थे, जो मैं सोचा कि आप जब अगले 2 ढाई दिन 3 दिन यहाँ हो जा रहे हैं, तो इसको इस एंगल से आपके साथ करने की कोशिश करें। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। एक बार पुनः आप सब लोग जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन को अपना कैरियर पाथ चुना, उसके लिए मैं आप सबको एक बार फिर साधुवाद देता हूँ, सैल्यूट यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. And please, Sangeeta, please. Just for a small bit for months. Yes. I have a photo. Yes. Oh. Made by right on there. Right. Now arts. Now is the key word. Okay. And sir, I request you to become the. One hour. Sir, sir,
Please, तालियां जोर से बजनी चाहिए। Now I got the opportunity to see the vote of thanks. सबसे पहले मैं डॉक्टर रुचि मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैम ने अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट समय और स्पेशली टुडे संडे मैम ने अपना समय निकाला और बहुत बड़ी बात आज मैम से हमें ये सुनने को मिली जो मैम ने कैसे लाइव एग्जांपल देके हमें बताया और मैम also suggested some books for us. Very good. Thank you so much, ma'am. And one more thing, ma'am, dignity or self-esteem. दो two things is very much important. अगर हम अपने स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ स्टीम और डिग्निटी की बात करेंगे तो हम उनको बहुत आगे सक्सेस के लिए लेके जा सकते हैं। सेकेंडली आई थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर सर ने बताया why advocacy is important for people with disability. उनके माध्यम से एडवोकेसी के माध्यम से we reach high like पॉलिसी मेकिंग की बात होती तो हमें जरूर अपने पीपल विद डिसेबिलिटी को उसमें रखना चाहिए किसी भी तरह की बात है हम उनको आगे लेके जा सकते आई ऑल्सो थैंक डॉक्टर देसाई सर सर के गाइडेंस में हम लोग बहुत कुछ करते हैं बहुत आगे बढ़ते हैं और इस 25 साल की जर्नी की सर के माध्यम से आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे And I also thanks Anand Maheshwari sir, Gupta sir, and Alok sir, जिनके हाँ ओ Manu, go back to Manu once again and Manu को भी बहुत धन्यवाद He was the student and he became the in charge of our whole transportation and he is good in making the money. So Share marketing. share marketing. He's making a lot of money and he is the board member. और एक चीज कि मैंने सबसे पहले लाइफ में कंप्यूटर सीखा मनुष्य ही कैसे ऑन ऑफ करना और सेकेंडली कैसे स्टेप लेना मनुष्य तो thank you all of you now request you please for we will just start a national anthem so please We break for He is in first group and I request you please join us. round. Round.
Would you could come in? What do parents say about that? Principal. Can someone please have all fun? Yes, yeah. No, sir, की रिक्शा, मग सर चाहिए नहीं, No. कोई अरेंज कर पाएगी. हेलो 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 हेलो. तो फिर यहाँ का माइक्रोफोन यहाँ पर तो आएगी, बाहर जाकर देखना पड़ेगा. मुझे बोल रही जो ज्वाइन बता.
Am I audible, ma'am? तुम कैसे सुन पाओगे उनकी आवाज को उसमें दिया है सर आउटपुट इसका है, इसमें है ना आउटपुट है. ओके एंड we welcome you ma'am and then we have Dr. Deepak Raheja is in the way and he will come very and he is the two chairperson and then we have with us Dr. Dimesh Desai sir as an expert of the whole PJ session and the whole seminar so we welcome you. Kavita ji, ma'am, can you hear us? There's no problem on that. How we listen to her? Yes, please. Yeah, please speak, ma'am. Savita, ma'am. Yeah. Good morning, Nimesh. And good Yeah, morning, good morning, team, Sylvia. everybody around. Output इसमें इस साउंड का आउटपुट इसमें चाहिए This call was audible. पेशेंट जो होगी ना, इसी का आउटपुट वहाँ जाएगा. जा रहा है ना इसी का नहीं वो डालने के ऊपर It comes on nine. Dr. Kavita Malhotra is here. Yeah, I'm there, Dr. Nimesh. Okay, that one. You need. Yeah. Yeah, you can start now. नहीं प्लीज आप एक बार ऊपर प्लीज बोलिए वहीं से बोलिए ये स्टार्ट नहीं हाँ उन्हीं को बोलना होगा वो सुन ही नहीं होगा Savita ji, हाँ जी, yeah, please. शुरू करेंगे क्या कि अभी Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेटअप कर रहे हैं? कर दिया. कर दिया, सेटअप हो गया. All right. And I have some co-chairperson with me. Who's there? Dr. Deepak Raheja, he is in the way. Dr. Deepak Raheja. Acha, he is in person out there? Yeah, he will come. He will join soon. Okay. So may I speak, Deepak? I can't see you. But anyways, Yes, ma'am. good morning, Dr. Nimesh and all the team of this national seminar on mental health. I am for the first time attending this and learned about this from Dr. Nimesh. I think one of the important things that I find in this seminar today is the focus on brain functions and the utility or the usefulness or the necessity of understanding brain function while talking about disabilities. तो हम सब जानते हैं कि disabilities बहुत common है, कितना affect करती हैं और कितना इसके बारे में there is a lot of awareness, understanding, advocacy, बहुत कुछ हो रहा है. Or it's not just the cognitive deficit, it's also the deficits in adaptational functions and that is there. But the important thing is that all this, the disability, basically mental disability, intellectual disability, or neurodevelopmental disabilities, the entire spectrum of disabilities, these are dysfunctions of the brain. There is some impairment in the structural or functional integrity कि जो वो completely properly develop नहीं हुए हैं या काम नहीं कर रहे हैं. And basically these are multifactorial conditions. There is a very great contribution of genetic factors. There is a great contribution of environmental factors, starting from prenatal, perinatal, postnatal. So it's extremely important for us to understand what happens or what goes wrong in the normally developing brain that produces this spectrum of disabilities. And until and unless we do keep our research focus on these aspects, we will not be able to really know the pathophysiological or the causative mechanisms
and therefore also the treatment and prevention. Treatment and prevention will come from only our understanding of what goes wrong, the pathology and the pathophysiology. तो ब्रेन का डिस्फंक्शन को अंडरस्टैंड करना, समझना, स्टडी करना, वो ये उतना ही जरूरी है जितना कि इन कंडीशंस को, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के साथ डील करना सोशल लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे, ऑक्यूपेशनल लेवल पे तो डील करना। वो तो बहुत कुछ होता है, लेकिन समवेयर व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ डिसेबिलिटीज we tend to forget about what is happening in the brain underneath. Because once there is a disability, there is a structural impairment or a functional impairment in the integrity of brain functions, synaptic functions. So these people who have disabilities, they have great amount of impairment or difficulty in adapting, in learning, in controlling their emotions. Their emotions, emotions, they have a very extreme kind of an outburst of emotion and do not very easily settle down, and they have temperamental differences and impairments. So all these things are there which we deal with, and we need to understand that all this is arising because of the brain dysfunction. The child or the individual, the person is unable to handle emotions, situations, and demands of life. So I'm glad we are talking about this today, and Dr. Nimesh Desai is here who will speak about what is written in the program is scope of the seminar. So we will hear from him. And if Dr. Deepak Reheja would like to make any comments at this stage. Thank you. Thanks, Savitaji. Like I said at the start, Professor Savita Malhotra is a very experienced and adolescent mental health professional at too many levels. And so it's great that she's here. For advanced diagnosis, ma'am, I understand if you have to leave at 12:15, Deepak should be here by 10. Okay, if you have the slides, please. Yeah, thank you. Like we said at the start in the morning inaugural, it's possibly for the first time that we are systematically, as a group with all of you, wanting to examine this issue of relevance of brain sciences. And I think those few sentences were very, very worth their weight in gold. What Professor Savita Malhotra said is very crucial, that while the compassion aspects, while the social inclusivity, while the legal rights issues must happen and they keep happening and they'll get better, lot of this should be rooted, or at least should be seen in the context of what happens in the brain functioning in different intellectual or developmental disabilities, especially when it comes to treatment and prevention. But like I said in the morning, I would really like Alok and all of us would like that in this 2 or 3 days. Sure, thanks. I would like कि आप लोग सेशंस में जितना टाइम रखा गया आज इसके बाद सेशन सवाल पूछे और अपनी राय बताएं, especially the second and third day when we have a lot of open house discussion provision. So please grasp whatever we try to tell you. And my task is very simple here. मुझे यहाँ दे दोगे नहीं आप कर दोगे चलो next करो. See what's the purpose or what are your techniques? I tried laying down here. One, to examine the relevance of brain science information जितनी भी अभी तक हमारे पास available है, okay, for enhancing the advocacy and inclusion both programs and practices. क्या हम हमारे programs को और strengthen कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं अगर हमारे पास brain science information assimilate होता है. To examine more brain science information, your practice and advocacy will increase the comfort and the efficacy. The comfort of the providers like us, advocates, as well as the society. Because I have been feeling for a long while that we have to keep talking about what is actually, and this has not been said in the morning, including by me. These are invisible disabilities. Locomotor, hearing, visual is easy for the society to appreciate, and all of you know like that. See, these are invisible disabilities.
Would it be easier for the society to accept? Would it be easier for us to dialogue with the society if we have some brain science information, including diagrams and whatever demonstration we have? And three, to examine how this can be achieved. अगर हम question 1 and 2 का जवाब mostly as a group years में पाते हैं by tomorrow and day after, then the question that would remain is how do we do it? How do we get brain science to our own learning and to the society? It's that is scope. Before conditions, it can be officially not included in the list of 21 year, but ordinal spectrum intellectual deficiency, social learning disability, we agree that we do think is not to include development issues. And of course, related disability. Not everybody with mental illness has disability. It's a very small percentage. It's possible, but there is still a sizable proportion of people with mental illness, especially severe ones like schizophrenia, bipolar, and a few others, remain disabled for lifetime. That's the outline that I want to put in. After this talk, sessions 2, 3, and 4, 2 today and 4 tomorrow morning, will be really primers on basic science, on brain science. So, these 3 sessions might be more about listening to what our people have to say. Of course, we will clarify their questions. We really have good colleagues to talk about basic brain functioning as applied to these ITD conditions, and then of course cerebral low functions and Sections 5 to 9 tomorrow are really from a variety of settings, good practice models about disability inclusion and advocacy, especially with reference to the theme of brain science. If there's anyone of them views, how do they find it? And the last day, section 10, 11, 12 is really for, like I said, to get your views, our collective views, and see how to work forward. Alok and even we discussed this a lot over the last 1 or 2 years, especially. Should we be having a full 2 or 3 day event on this? Should we put together 50 or 60 or more people and see what the possible usefulness of understanding brain sciences or what we do? One, like Madam Shankar hinted, so well, understanding the symptoms of the problem behaviors. And I must say here, as I was on the slides, many mental health professionals, including psychiatrists, must say, and certainly a lot of our clinical psychology or the other colleagues, actually do not really have a fair idea of what are the main mechanisms, why do the symptoms happen, why do these problem behaviors happen. Two, appreciate the reasons for what were deficits, and that's why I enjoyed Kamal. Next. Three, and more important, understand the reasons for spatial abilities. It is said in the morning that one or the other faculties are really extraordinarily well developed or undevelopable. Three, accept the higher possibility of side effects of medication. This is something that almost never happens in discussion. People with IDDs, as and when they have mental issues for mental health disorders, and they are given medication, or even for some of the problem behaviors, as part of the IDD, when they are given medication, it's certainly a higher possibility of side effects because of what's called as a compromised brain situation. And four, possibility of remediation, treatment, and even cure. Again, as Abhinaji said, very enough, once we understand, and science has begun to understand, scientific research has begun to understand what happens in all the spectrum, what happens in the ADHD. Now, if we can get into our awareness, in the long term, that is what going to lead to treatment, possibly even cure. I must recall the HIV pandemic there. HIV pandemic was there, and of course, the recent corona pandemic was another example. Two epidemics in last 30 or 40 years. One, a long drawn out, and the second one, a very rapidly fatal one. Both had tremendous amount of human endeavor and science and money thrown in. First to find out the research and the cause, and then find the treatment. That's what they do. Who can benefit? Who should be the beneficiary of all such efforts that we are trying this videos? Like I said, mental health professionals, including psychiatrists and psychologists. Disability sector have care professionals, special educators and teachers, human rights lawyers and advocates, family-based advocates for sure,
and even self-advocacy. They begin to understand the extent possible what is it that happens in the brain that leads to what happens. Next one, please. What are the perspectives? And this will really the next 2 or 3 sessions. I'm just trying listening to as a backward. Like it was said in the morning, if you remember, by chief guest, Luigi, saying, we have gone from neuroanalytical to neurophysiological. Ruchi said, I never understood why neurophysiology is not taught in special education. But brain science has gone far beyond that. We have reached molecular biology, we have reached subcellular level mechanisms, we have reached epigenetic issues, and of course, imaging and implementation like Pankaj and the colleagues in the morning, what AI will do. Next one, please. How do you possibly achieve this? And this is my lead to the group for day 3. Training of professionals, elect professionals must include some amount of brain science orientation. Here I must say, Dr. Farooq and the Anupra's team and we have discussed that it's wonderful that large part of the people who registered for event this 3 days are psychologists and clinical psychologists, and that's great. And I must say that while the active curriculum at NSMH or a few other leading centers like CIP or NSMH and a few others have on paper neuroanatomy and neurophysiology, not the other parts of brain science. In actual reality, there is very little of that reading that ever happens. Okay, if you face it. MA psychology, again, a lot of progressive universities have some amount of anatomy physiology. Doesn't happen too much. So there is a deficit right in the main curricula first. 2, self-learning, including Google, of course, with a caution. 3, peer group learning, informal, semi-formal, at your workplace. 4, more CREs, more seminars of this nature. And 5th, should we be considering specially training modules for brain science research, available information for all those 5 groups of people that I was saying now in previous slide. Next one, please. I think I'm done. Thank you. If there are any quick comments, please feel free. Through this, we are trying to set the tone for these 3 days. So any immediate reflections, please feel free. Our senior colleagues, front row, all very family-based advocates to very experienced policymakers and professionals to mental professionals to corporate colleagues. Any immediate reflections on should we be spending these 3 days or should we be spending more time after these 3 days or not? After these 3 days. Yes, sir. Please put that, sir. सर अभी तक जो हम लोग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की बात कर रहे थे या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट विद डिसेबिलिटीज की बात कर रहे थे तो हम एक तरफ फिजिकल कंडीशन देखते हैं एंड वी नेवर वेंट इनटू बायोलॉजिकल कंडीशंस कि उनके अंदर क्या चल रहा है तो आई थिंक ये टॉपिक हमारे को थोड़ा उनके ब्रेन के अंदर घुस करके क्या हो रहा है उसको हम कैसे कर सकते हैं तो इसमें टॉपिक रखा हुआ है कि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है तो हम कैसे ला सकते हैं उसके बारे में हम शायद कुछ निकाल सकें पहली बात दूसरी बात यह है कि आई थिंक ये एक इवॉल्विंग टॉपिक है इवॉल्व हुआ है पहली बार शायद आई थिंक पूरे इंडिया में इस तरह की पहली सेमिनार ये होने वाली है सीआरई में कि किसी ने ब्रेन साइंस इसके ऊपर बात नहीं करी है कि हाउ ब्रेन साइंस कैन ब्रिंग अप चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कि अगर उसके बारे में हम मालूमात करें जानकारी हासिल करें और जानकारी हासिल करने के बाद में उसमें कुछ एक्शन लें कुछ काम करें कुछ क्रिएटिव बनाएं कुछ एक्सरसाइज बनाएं तो ये काफी आगे लेकर के जा सकता है थैंक यू सर I must say, Professor Sarita Malhotra is with us online and our co-chair, Dr. Deepak Raheja, the famous leading psychiatrist from Delhi. Deepak is also here. Sarita ji, ma'am, over to you and Deepak. Okay. Deepak, you are there? Yes, ma'am. Good morning. I'm here. Good morning. I can't see you though. All right. Anyways, Dr. Nimesh, I think this was very good overview. This was very good perspective, context setting about the whole theme, the topic and the scope. Obviously, I think
The importance of the whole topic has been highlighted and understood, and we need to really take it along and take it forwards and work around it, because this is an area, disabilities is an area where a multitude of professionals have to come together, work together, and in sync with each other, and take forward the entire the issue of understanding, diagnosing, treating, preventing, and the entire spectrum of interventions that are needed in this area. And again, intellectual disability, when we talk of various contributory factors, when we talk of genes and genetics, there are a large number of genes. It's a multifactorial thing. Many factors contribute to it. When we talk of genes, even number of genes, it's not a single gene, a number of genes, they contribute to it. So as our medical science is progressing, biological sciences are developing and are becoming far more, they are becoming far more precise. We are looking at even the kind of a various genes or just genetic mapping of these conditions, and intervention at the very core level, at the very onset issue level, might become possible. I mean, these are the hopes that we have for future. So the brain sciences have to be kind of, if they are it's extremely important, and should be kind of understood and carried forward. The audio quality has not been very good. I could see your slides, and Dr. Nimesh, and understand about 50% of what you were speaking. But anyways, Deepak is there. Deepak Reja, you just take up further if there are any questions, and please interact with the audience. जी थैंक यू मैम। पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं लेट हो गया एंड आई मिस द प्रेजेंटेशन बाय डॉक्टर साई सर, miscalculation of time. But I don't know if he in his talk quoted the famous quote that he always says, that we are possibly temporarily abled. I don't know if he mentioned that, because I quoting him. And that gets me to extend that to say that possibly being disabled is a trait of being human. All of us grapple with disability in some way or another, and a whole lot of us are able to restrict and confine for others to not know and to not be visible. And some of the statistics by WHO go on to say that significant morbidity experienced because of disability might be as rampant to the tune of possibly affecting 1.6, 1.7, 1.8 billion people. And that's a huge number where we're talking about significant disability or significant dysfunction that's caused. And like I said, to some extent, all of us grapple with and I think the relevance of this program, the topic is so invigorating. It is so exciting, because I think one denominator that it eventually boils on, and I know Dr. Desai sir has been advocating very strongly for it, is to possibly generate more empathy for people who are grappling with this. I think that is the one common, and we do know disability by default comes with marginalization, discrimination, stigmatization, not just by the society, but by one's own self. And when you are ostracized or you are viewed with a particular lens, like we say, I mean, it's not just enough to hold those marathons and to wear a t-shirt which says, I am schizophrenic, so what? I think what's very, very important is being able to integrate them. And like we were talking in the earlier seminar, which we had organized, that
maybe if I pick up this bottle and throw at the audience, the empathy will suddenly disappear because there's also hurt involved. And it's not just talk because it was an action that invaded into the personal space, and unfortunately, it does invade into personal space. And like Dr. Madam Sabitam was saying, that I think more intensive research that goes into genomics, that goes into understand that all psychological processes are biochemical processes and vice versa. Or biochemical processes will manifest in the form of behaviors that are manifest. And as I talk, my ability, so the functions largely, if we see, is the ability of the neurons to prune themselves, as we go through and we understood, like we kept saying, that possibly the brain development only happens during the first few years, and then we went on to establish that neuroplasticity is an integral part and trait of the brain. Just the dynamics may change, and the manner in which we may do that learning to be able to bring about those changes in metacognition. So today we live in a world where metacognition is a reality. We understand how neuroplasticity operates. We understand how learning can keep happening. And as we do that, the processes of rehabilitation. I did come across somebody very important who had a brain injury, fell down, had a traumatic brain injury, had a hematoma, and went on to become, experience the disability in various forms. And the family, of course, was very resourceful, and they chose to spend the kind of money that they did in mastering resources from abroad. But the mother kept on saying that the resources in our country, and we were not very happy because for all the other purposes, we doctors were Indian, but for neuro rehabilitative resources, we had no choice because the resources there were limited. So eventually, if we can have seminars like this, go on to bring in recommendation and get a liaison with the government where we have more, today we talk about medical tourism and we are attracting attention from all over the world. Why cannot we eventually go on to have state-of-the-art neuro-rehabilitative centers? And that will only become a reality when we have more, the leadership, the intent where we can muster and liaison with the government so that we have a more, and that can really happen when we continue to muster a better understanding of how the functioning of the brain, the neurochemistry of the brain is responsible for my ability to inhibit and stop where I want to stop this conversation. To be able to use the mirroring neurons to see the nuances of the emotions and what might be the undercurrents, to be able to understand when and how to meander the course of this conversation in a particular direction. And all these things seem very simple, like buttoning my shirt when I wake up in the morning, but when somebody goes through that disability, the first test for functionings that we do, including executive and metacognition, is to start with what is a matchbox, how do you light a matchbox, how do you button, and sometimes these are the processes that you have to help to teach, to remediate the brain to be able to, and it's possible. We've learned that even adults who go through injuries like that, and I think that will be the harbinger of research for not just traumatic brain injuries, not just for the disability sectors in the pervasive developmental disorder, but also in the aging population in the treatment of dementia, Parkinsonism, movement disorder, which are disabling. We might be able to understand, and I think all clinicians, because sometimes we dichotomize to say I'm a clinician, research is not my forte. This is of course not him, but people who work with bigger institutions will say that I am a researcher and I'm a teacher. I think all of us are clinicians and all of us are researchers because we have very important pool of patients. I do know some very interesting research that Dr. Smita Deshmande has been doing for almost 3 decades now on schizophrenia. And it's very interesting to see how
some of the branches in the genomic sequence will alter and will carry through forward in one generation to another. And if we can find and get to that cause, I think there'll be better molecular genetics. We will have better medication, which will be target focused, and we'll then be able to amalgamate and use technology, because we also live in the world of artificial intelligence, and because of now functional imaging techniques, PET scans, SPECT scans, functional MRIs, we are able to actually see how certain areas in the brain become hypometabolic, how certain functionings in the moment can be localized to specific areas. And as we go on to do that, then we understand the limbic areas more, the hippocampal areas more, our interest into them will be twofold: how the neurochemistry is behavioral and how the behavior is neurochemistry. And as we want to do that, I think our understanding will become more robust. And I really see a need for us to be able to keep the initiative which this organization and the sites have taken, so that we are able to continue to absolve these sufferers from looking at them as causing or bringing them upon them these symptoms that they go through. And that takes away empathy. That's very, very sad to see how sometimes we become judgmental because I picked up this bottle and threw at a gentleman and it hurt him. And I think as we take it forward, even the perpetrators of the most heinous crimes, their brains are worthy of that research, because when we see such crimes with so much disgust, how is the individual able to generate and deal with the guilt? I mean, the superego, the ego, the functioning, the executive functioning, the metacognition, how these people are able to, indulge into things like, rapes and chopping body parts and so on and so forth. And we see them with so much disgust. And how, so I think those brains also work as examples where we can see and understand how the human behavior and emotions are generated because of very intense interplay of neurons and dendrites and tunings and neuroplasticity and metacognition in the brain. So I really thank you very much, sir, and congratulations. I'm really sorry I've missed your talk, because that was the icing that I really wanted, the miscalculation of travel time. I think we could open to some short questions that the audience may have. Once welcome to Dr. J.P. Singh here, the first representative of RCI is here. Anil Joshi, one of the family-based carers with a humongous success story, and somebody who has contributed to a lot of dialogue, including the national policy in dialogue formulation. They are both here. Working, somebody. I'm just trying to understand how our program is being run, clinical psychology. I was trying to relate with them. They are looking into the behavior of the behavior therapy and all that. But brain science, this I don't find that Sir, curriculum में है. curriculum में है, लेकिन वो मतलब उस तरीके से कभी बताया नहीं है. Never we have never discussed this in a broader way. आप जो बता रहे हैं, it's really good for everybody, every professional to understand. It is not only IDD or वो हम लोग blind disability और ये बोलते तो हट जाते हैं. सभी के अफेक्ट करता है. जीनोम के बारे में बता रहे थे. तो बहुत ही लेटेस्ट एडवांसमेंट है. और अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने बताया, I think we can do a lot of work in this area. How to involve the government into this? Nobody has approached the government. See, the idea is not that government is always there, but come and put up that issue. And at present, the government is very sensitive about all this disability sector. At least they are sensitive about this. Somebody has to see. Money is not a criteria for the government. Now they got enough funds. See, when they say we have got enough funds, somebody should approach them that this type of research can be done in India also. And one institute can be encouraged to do that. If they want in Delhi, Delhi can be done, or any other places. Nuance.
I do not know whether Nimas is connected with the research take this type of thing. My concern, if I might say, and Anjushi might, or Savita ji, everybody, or that. My concern is slightly different. Cutting edge research is wonderful. Cutting edge research is very exciting. But my point, and Alok and we have discussed in another monocasting, is whatever research we have accumulated in last 20 or 30 years, that has to reach the professionals and the family base at home. Yes, that is correct. Answer. That is correct. How to do that? That can be done only through the seminar and workshops. Then, see, even the professionals, what they are teaching in the classroom or other places, they are teaching only the subject whatever they have given to them, according to the examination point of view, not from the practical point of view. As Madam Satya was saying, prenatal, postnatal, all these things, anywhere, what the effect is there, that we are not sure. We have been doing that, these activities to be done, and this will stimulate the child and he will grow. But what is the cause behind that? Why we are doing that? That we have never, I think we have never elaborated this. I have not seen in the class this is going on. If I might say something on the screen, or Aniti we recognize that these are invisible disciplines. But by lack of brain science in our advocacy and practice, we make the invisible more mysterious. So the purpose, I think, would be to demystify the invisible IBDs. If you have to provide scientific information. We have to work on this. And I am sure that the way the program is starting, by the end of the program, we get a lot of solutions for this. How we should approach the whole country. See, there are number of institutions who are doing now. In the area of intellectual disability, teachers are being trained, but they have not been given this idea of brain science. So they know that behavioral therapy में खराब है कुछ गड़बड़ है इसमें बच्चों में ये देखना है इसके लिए ये एक्टिविटी करेंगे तो उस तरीके से सीखा है हमने. See, we have in our own country we never had any experience in this area. We learned by the experience of those, as you said something, we are added in the curriculum. So whatever the topics have been added into the curriculum is just by the experience of others. No research has been done. It is all verbal. See, even what you are saying is also, I do not know whether the research has been done on that or not. So your experience, you have gained some experience, and you told the curriculum committee that this will be added. So we added that. So that way it has come, but your practical research. The brain science as a research is a very big topic. So just googling it. So before coming to this place, why got so many billions, trillions, and then what is you call neurons going around, synapses and all that. Very vast topic. Some portion of this can be explained to the teachers that you should understand this, and that is why this caused in the brain. This is what the damage has been done, and this is particularly affecting this learning disability. Why? Stress, strain, and all that. This word we have listened, but how it has come, that steps somewhere to look into that, and I'm sure the government will look into that. The first thing you should approach the government. Yeah. In fact, before you place Anjushi, I have the second thought, certainly Deepak, Anilya, one is what we said, that we let demystify the invisible disability by bringing more brain science evidence to discourse. The second is the skill of a good trainer is to make the most complex available evidence understandable in simple manner. Yes. And like you were saying, all the available brain science research today is already so complex that will require skill to simplify it to reach an average person. मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी होगा कि हम टीम वर्क को ये डिमिस्टिफाई करते हुए इस बात की रेलेवेंस समझें कि जो एक बिहेवियरल साइंटिस्ट कर रहा है, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट कर रहा है या रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट कर रहा है, वो भी उतना ही अहम है जितना दवा कर रही है. सो बिकॉज क्या होता है कि जब मेरे पास आता है, आई एम एन आइसोलेटेड पर्सन एंटिटी, तो मैं कहता हूँ कि मैं दवा दे सकता हूँ और वो जो मैं कर सकता हूँ उसको मैं ग्लोरीफाई करता हूँ और जो मैं नहीं कर सकता उसको मैं अरे देख लीजिएगा इसको कराना. तो
विदाउट रियलाइजिंग, जो अभी 2 दिन पहले एक पैनल पे बात हो रही थी कि मैं विद्यासागर साहब को कोट कर रहा था कि 25 मिलीग्राम इमिप्रामिन से वो ठीक करते थे, और डॉक्टर शशि राय मैम ने कहा कि मैं डॉक्टर मलिक साहब के साथ काम करती थी, और वो सेवन ने 0.25 आधी गोली, या नीति साहब भी इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन, जो कि हमें जो नाइव यंग माइंड्स वुड फाइंड इट कि ये तो साइंटिफिक ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं, तो वो मुस्कुराते थे और ये कहते थे कि अभी तुम सीखोगे कि ये जो मैं आधी गोली से कर रहा हूँ ये सिर्फ इतना है, और उसके अलावा जो मैं आधा घंटा या 1 घंटा मरीज को दे रहा हूँ उसके द्वारा जो मैं न्यूरोसाइकोलॉजिकल मॉड्यूलेशन क्रिएट कर रहा हूँ, दैट्स मेकिंग अप फॉर दैट। एंड इफ आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, अरे ये क्या पर्चा है, ये तुम, I think it's very important that when we take it out to the government, like sir you are saying, we should have a consensus and a teamwork. So because आप कुछ कहेंगे जाके, मैं कुछ कहूंगा, ये कुछ कहेंगे, तो वो जो हम पे बैठा हुआ है चेयर पे, वो कहता है इसको अभी साइड में रखिए, इनको क्लैरिटी नहीं है क्या है। सो वो जो आई थिंक दैट कंसेंसस बिटवीन अस when we take it as an advocacy manual is very important. If I can say one or two things here, I've just heard the discussion. I think and the last comments from the last speaker in the audience, very very important comments have come. और सबसे ज्यादा तो ये है कि ये जो फील्ड है ना, इट्स नॉट ए फॉसिलाइज्ड फील्ड। डिसेबिलिटीज का ये नहीं है कि ये बस एक कंप्लीट एक डिब्बे में, एक ब्लैक बॉक्स में एक एंटिटी पड़ी हुई है और अब हमको इसको बस सिर्फ डील करना है, ये वो नहीं है। इट्स नॉट ए फॉसिलाइज्ड फील्ड। और अगर हम इसको ओपन नहीं रखेंगे और इसकी फर्दर डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग और रिसर्च उसमें नहीं जाएंगे, तो हमारी वो तो हो रही है साइमल्टेनियसली, लेकिन दिस हैज टू, एज आई understood from the comments, that it has to be incorporated in our curricula, in our planning, in our discussions and so on. तो ये सबसे ज्यादा ये जरूरी चीज है कि ये इसमें ये आनी चाहिए और ये होनी चाहिए। और बाकी ये है कि जो हम इंटरवेंशंस करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर टॉकिंग टू अ पेशेंट, व्हेन वी आर काउंसलिंग, when we are doing behavior therapy, or when we are any psychological intervention is being done, that also operates and works through brain, the structure and function of the brain. It alters the brain. ये ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करी है डॉक्टर दीपक रहेजा ने, तो ये ब्रेन जो है वो सीखता है, बदलता है, साइनेप्टिक कनेक्शंस बदलते हैं, नए कनेक्शंस बनते हैं, न्यूरॉन्स नए जनरेट होते हैं, डेवलप होते हैं। तो ये चीजें हम जो करते हैं, तो जो भी हम बात करते हैं मरीज से, या उसको समझाते हैं या सिखाते हैं, स्किल्स देते हैं, सिखाते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जरिए या और किसी भी ट्रीटमेंट इंटरवेंशन के जरिए, तो वो चीजें ब्रेन में जा करके वो नए नए साइनेप्टिक कनेक्शंस, रीऑर्गेनाइजेशंस और ये पैदा करते हैं और उनकी लर्निंग को एनहांस करते हैं। तो जैसे कि अगर डिसेबिलिटीज में जो साइनेप्टिक जो डिसफंक्शन है ऑलरेडी है, कि जिसमें एक सीधा रास्ता है मंजिल तक जाने का, उसमें अगर ब्लॉकेड है या प्रॉब्लम है, तो इन इंटरवेंशन से हम साइड लिंक रोड्स बनाते हैं। तो नए लिंक जो है साइनेप्टिक कनेक्शंस के लिंक रोड्स या सिनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं, और वो प्रैक्टिस से, बार बार दोहराने से वो मजबूत होते हैं, पक्के होते हैं, और उसके बाद में फिर वो उनके हैबिट पैटर्न में आ जाते हैं और वो सीखते हैं। तो इस तरह के इंडिविजुअल्स को हमें सिखाने के लिए ये सब मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो ब्रेन साइंस अल्टीमेटली जो कुछ भी होता है वो ब्रेन के द्वारा, ब्रेन के जरिए, ब्रेन की मैकेनिज्म के थ्रू ही होता है। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, ताकि हम ये, क्योंकि ब्रेन साइंसेस तो इवॉल्विंग और डेवलपिंग साइंसेस हैं, और हम सर्टनली श्योरली अगर अभी नहीं तो कुछ डेकेड्स में इसके बारे में फर्दर बहुत अच्छी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ सकती है, और जरूर आ पाएगी, और उसी की तरफ हमारा जो है ये सारा का सारा एफर्ट जारी रहता है। तो हमारे जो दूसरे काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, एनजीओज हैं, ये सब है जो इतना काम बेहतर करते हैं, इन रेमिडिएशन का काम करते हैं, और इनको ट्रेनिंग का काम करते हैं।
तो उनको ये समझना चाहिए कि ये सब ब्रेन के जरिए और ब्रेन के द्वारा और ब्रेन के थ्रू हो रहा है। और ये जो है मतलब एंड देन दिस बिकम्स ए रेगुलर परमानेंट, सो टू से परमानेंट हैबिट्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स, जो कि हम चाहते हैं कि उनके डेवलप हो जाएं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. So thank you very much for having me here. For any concluding comments, Dr. Deepak, you can make and you can close the session. Am I, did you hear my last comment? Am I audible? You are not audible to me. I can't hear. Audio is gone. See, the relevance of brain Yeah, science it for has come back. disability can never be overstated. I would like to add one thing. It's more specifically intellectual and developmental disabilities. Not that other disabilities will not be benefiting out of it, but if we consider sensory or physical disabilities, probably we are addressing one dimension. Whereas in case of intellectual development disabilities, we are addressing multiple dimensions of functioning of human being. And that's where probably understanding of the brain sciences in a filtered manner. What the disability sector possibly needs is the distilled knowledge coming from the core research. And I would like to, being an engineer and IT professional, I would like to call it applied research. We need to have applied research for better addressing the issues faced by persons with intellectual and development disability, not just during the developmental years, but throughout the life cycle. Possibly, once we have a better understanding of these conditions and how the advancements in brain sciences are going to help in the process of rehabilitation, that will be able to consider advocacy and dream of inclusion. So the first step where it's going to really make an impact is understanding first, filtering out the knowledge. I'd like to share one thing. The disability sector, among others, including medical sciences, is jargonized. When it comes to the primary caregivers, including the special educators and the people who are routinely looking after a child, there is an urgent need to de-jargonize. Because I come across counsel hundreds and thousands of parents. Believe me, they find it difficult to understand if there is a difference between mental retardation and intellectual challenges. When it comes to filling the form for school admission, so they need to be explained that no, it's the government terminology which is the same these days. Then comes specific learning disabilities. So we really need to define and do away with cliched things. We have to focus, and then yes, such initiatives are required. They are required more frequently, probably every year at all the stages, so that we can help the child as early as possible. And trust me, every child has the potential to lead an independent. Every child. We all need help, so do our children. Thank you so much. And my heartfelt compliments to Malavika and Dr. Mini Desai and also Dr. Savita and Dr. Prayagati for raising the opinion and organizing this. Thank you so much. Just brief one, sir. One caution that I come to my mind from what Aminji said. While we are trying to get science knowledge, let's not add to the already confused jargon. So, like you and I both say, we have to really make it as simple as possible and get scientifically valid. Thank you, sir. दीपक जी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बीच में episodically rhetorics होते हैं. I think we need to go beyond rhetorics and repetitiveness. And like both of you very beautifully said, sir, that a distilled knowledge
applied research, and then a teamwork which we take to the government. I don't think with the current government, both the intention or the resources is a limitation. And if that's not a limitation, maybe, and because everybody is now becoming more sensitized and more aware, and they're willing to help and contribute in whatever which way, I think this is the time to help detangle, demystify, destigmatize, and like you said, the brain health for all. Why not? And at a price from the government and private sector, which is affordable. I mean, it can't be a mystery where I go to a set of doctors and he is willing to charge me anything and everything because there's some mystical treatment that he is willing to offer. And if it's scientific, and if the nodal agencies and the government are offering it, in private sector people will align and will follow suit. So thank you very much, sir, and congratulations to you and change my head to one of the organizers on behalf of the Manovikas team. Madam Savita Malhotra ji, thank you so much. Thank you very much. Thank you. So before we conclude, from a rehab perspective, just wanted to say one thing. Sure. Definitely brain science. I think I'm audible. No, it is not. Okay. Madam ko sunaiye. Okay, so from a rehab perspective, I really feel it allows the ghost out in the daylight. When you know about the brain science, when you tell a parent that why a child is always swinging something or rotating something because the vestibular is disturbed, it definitely gives them a lot of trust. What's are already talked, in this slide. I think in India we might be doing it for the very first time, but please, dear all, open the websites. All the international medical journals, they have enough of research data about brain associates with all the disabilities. And I think it's high time that we should know about it because we are the one we face the parents sometimes for the counseling purpose. Because our all respected psychiatrists and everyone are busy and they have a bigger job maybe sometimes to do. And we can spend that time. So we must know about it. I must congratulate sir because we have thought of this topic. Thank you. So thank you so much. Thank you. Thank you very much. Go on and invite me next. कुछ टोकन देना सविता जी मैम हाँ जी तो आपको वर्चुअली पहुंचाएंगे अच्छा ठीक है Thank you very much. Thank you. for to Deepak. Yes sir. दीपक की वाली बहुत नहीं हमारी ये लाइक हाँ गुड आइडिया थोड़ा पीछे हो जाओ Actually, मैडम के साइड में हो जाओ ओ स्पेस देंगे तो हो गया आओ सविता जी मैम अच्छा साइड कम करो बेटा आपने All right. और कम करो Okay. ब्यूटीफुल थैंक यू Great. थैंक यू रियली थैंक यू Thank you. Okay, to continue with the next session, session 2, we have Professor Shruti Srivastava, Director, Professor, UCMS and GTG Hospital, to chair this session. And we have a speaker who had been out of town, traveled late, reached very late last night, but she's here. Another professor and head department of psychiatry from RML Hospital, Professor Meena Chandra. Please, both of you ladies, will come to the stage, and I think this like just right, help her, Dutta, please. ये अपना एरिया है हमको बताया क्या क्लिनिकल साइकोलॉजी सब मिलके आपस में एसोसिएशन चारों एसोसिएशन बैठ के इन पर डिस्कस करेंगे We can start. Thank you both. So you can start from here. किसकी स्लाइड हाँ स्लाइड यू वांट विच स्लाइड सीबी की स्लाइड सीबी की स्लाइड ये पेन स्ट्रक्चर के नाम पे स्लाइड मीना चंद्र की स्लाइड My favorite city of that. खोलो Bye, Shruti.
Enjoy yourself. Happy journey. Cool. ये कुछ स्लाइड खुल नहीं रही है कॉपी करनी पड़ेगी कहाँ पर तुम्हारे इसमें पावर पॉइंट है उसको उस पे डालो पावर पॉइंट को डाले हो उसमें उसको डालो उस पे किस पे नॉट स्लाइड पे ड्राइव पे So it is a proud स्लाइड पे चला रहे थे Professor Dr. Meena Chandra. He has done post graduation in the field of psychiatry, and after that she has done a PhD in neurology. She is currently so she will be sharing as a resource faculty, she will be sharing the brain science, which is very relevant to this topic. And awards and fellowships, she received from Commissioner of Police Delhi Award for COVID-19, WHO Fellow in Drug and Alcohol Medicine, and she is a postgraduate teacher, PhD co-guide, external examiner, and has received 6 research grants and 48 international national peer-reviewed journals, 5 book chapters, and co-authored national standard treatment guidelines. So without wasting much time, let's listen to her. Is this your slide? This is your slide, na? Morning, namaskar. Namaskar. सबसे पहले big thanks to Dr. Desai sir who involved in this. I was a little reluctant because I was traveling, but I'm so happy to be here. Some disclosures. Ministry of Health and Ministry of Social Justice and Empowerment last year decided to revise the disability guidelines, right? And I am member of several committees, subcommittees. So I am member of several committees, including the one of intellectual disability, ASD, developmental disorders, mental illness, and I'm also chairing the committee on multiple disability, because disability nowadays keeps on coming in pairs and multiples. So an unfortunate child might have intellectual disability, but may also have cerebral palsy with locomotor difficulties also. One thing that was just raised in the discussion was about intellectual difficulty versus mental retardation. So we are trying to simplify it by proposing a concept, which is a scientific concept of global developmental delay. Because when a child is very small, तो बच्चा बहुत छोटा होता है, 1 साल 2 साल का, हमें से डेवलपमेंटल डिले पता होता है. वो डेवलपमेंटल डिले के बाद बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी जा सकता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में भी जा सकता है, दोनों की कंबाइंड कोमॉर्बिडिटी में भी जा सकता है, और कई बार विद गॉड्स ग्रेस, विद पेरेंटल एफर्ट, बच्चे कई बार नियर नॉर्मल पाथवे में भी जाते हैं. तो 1 साल 2 साल में किसी बच्चे को लेबल करना कि ये डिसेबिलिटी है, वो भी फेयर नहीं है. तो उसमें हमने प्रोटोकॉल बिल्ड किए हैं फॉर रीअसेसमेंट. तो दिस इज जस्ट बिकॉज में डिस्कशन हुआ. आई विल टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ ब्रेन फंक्शन. बहुत सिंपल वे में मैं बताऊंगी. ये टॉपिक तो एमबीबीएस स्टूडेंट्स के हाथ ही लगाते, दे आल्सो फील कि इट इज टफ. ब्रेन अच्छा है. नहीं, ब्रेन अच्छे के बाद में मुश्किल आसान नहीं है. जो लंग्स को समझना आसान है, हार्ट को समझना आसान है. एक तरफ से खराब खून आता है, दूसरी तरफ शुद्ध होके जाता है, तो वो आसान है. ब्रेन मुश्किल है, लेकिन ब्रेन को समझना भी तो यही मास्टर है ना. और ब्रेन एक यूनिटरी ऑर्गन नहीं है. ऐसा नहीं समझिए बस एक ब्रेन है ना, बस ब्रेन है. ब्रेन के अंदर बहुत जगह है, बहुत अलग अलग फंक्शन ब्रेन में होते हैं. जनता नहीं समझती ब्रेन क्या है. बहुत सारे साइंस वाले लोग भी नहीं समझते क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना.
और कई बार कुछ कुछ ब्रेन के फंक्शन का लोग कहते हैं नहीं हार्ट से है, कि बच्चे का दिल बदल गया, है ना, बट वो फिगरेटिव है, वो लिटरेरी है, वो बायोलॉजिकल नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि आत्मा से है, बट एज साइंस वी विल स्टिक टू यस, सोल है, उसके अपने स्पिरिचुअल कॉनोटेशन है, लेकिन हम बात हमेशा साइंस भी करेंगे तो ब्रेन भी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। एक चीज है नर्वस सिस्टम, जो सारी कोशिकाएं नर्वस सिस्टम, उसमें दो हिस्से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो यहाँ पे ब्रेन और आसपास स्कल के आसपास, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पूरी बॉडी में ही बसे जाती है, क्योंकि कोई भी ब्रेन ऑर्डर देता है, उसकी इंफॉर्मेशन मेरे बेटे का हाथ को हिलना है तो कैसे पहुंचेगी, नर्व्स के थ्रू पहुंचेगी, और मेरे हाथ में चोट लगेगी, उस पेन की इंफॉर्मेशन, दर्द की इंफॉर्मेशन नर्व्स के थ्रू ही ब्रेन को जाएगी। तो एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंपल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग, एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर, ठीक है, सिंपल सिंपल चलेंगे। वेरेवर यू फील कि टफ जा रहा है तो आप मुझे रोक दीजिएगा, क्योंकि अवेयरनेस तभी फैल सकती है, डिमिस्टिफाई तभी हो सकता है जब हम संवाद स्थापित करेंगे, नहीं तो फिर वो जार्गन चल जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। मैम नहीं, ब्रेन सिर्फ 3 पाउंड का ऑर्गन है, लेकिन पूरे शरीर के सारे फंक्शंस को ब्रेन संचालित करता है। जितना दुनिया में हो रहा है हमें कैसे पता चलता है, ठीक है, इंद्रियां कन्वे करती है, लेकिन इंटरप्रेट तो ब्रेन ही करता है। अगर ब्रेन नहीं हो तो हम कैसे इंटरप्रेट करें कि हम इतने लोगों के बीच में बैठे हैं, क्या चर्चा हो रही है, किस प्रयोजन से बैठे हैं। और जो माइंड एंड सोल के लोग बात करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बात करते हैं, केयर गिवर बात करते हैं, तो हम कहते हैं माइंड रिजाइड्स इन द ब्रेन, है ना, और जो आप सोल की कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हो हम उसे ब्रेन के फ्रेमवर्क में देखते हैं। हम डिनाई नहीं कर रहे सोल को, इसलिए कभी विवाद में नहीं पड़ना है, लेकिन अपनी साइंस का जो धरती है वो छोड़ने के लिए, तो ठीक है सोल है, स्पिरिचुअल कंसेप्ट है, लेकिन जो हम सोल को एट्रीब्यूट करते हैं, माइंड को एट्रीब्यूट करते हैं, रिजाइड्स इन द ब्रेन। जो भी इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, मेमोरी है, इमोशंस है, ये सारे ब्रेन में है। कई बार लोग कहते हैं कि बच्चे को, वैसे तो एडीएचडी बच्चा है, हाइपर एक्टिव है, खुद का फालतू रहता है, दिमाग बहुत तेज है इसका, उसको कोई चीज बोलती नहीं, ऐसे कैसे संभव है, क्योंकि इंटेलिजेंस अलग है और हाइपर एक्टिविटी अलग है और इम्पल्सिविटी अलग है, तो और अलग अलग ब्रेन के एरिया से गवर्न हो। तो एक यूनिटरी कंसेप्ट नहीं है कि अगर किसी को आईडी होगा तो उसकी सब चीज खराब होगी, ऐसा नहीं, उसमें भी बहुत क्रिएटिविटी हो सकती है, उसमें भी बहुत सारी चीजें नियर नॉर्मल या समटाइम्स जो हम सेवेंट सिंड्रोम कहते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी होती हैं, है ना, तो भगवान ब्लेसिंग देता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दो, क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी को आसानी से समझ पाते हैं और साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी को कम। बहुत सारे ब्लाइंड बच्चे हैं, ब्लाइंड पीपल हैं जो म्यूजिक में बहुत अच्छे हैं, वो नोट देख भी नहीं सकते लेकिन बजा लेते हैं, तो भगवान ने कहीं ब्लेसिंग दे रखी है। तो ब्रेन जो है उसमें बहुत सारे एरियाज, अब ब्रेन होता है स्कल में, तो कई बार लोग कपाल को, स्कल को ही ब्रेन कहते हैं, लेकिन स्कल एक बॉक्स है, वो बॉक्स के अंदर ब्रेन। नेक्स्ट टाइम, स्कल के अंदर भी 8 बोन्स हैं, ये बोन्स में इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे छोटा होता है तो बोन्स जुड़ी नहीं होती, तो कई बार जो फॉन्टेनेल है, तो हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, तो कहते हैं कि ये फूल रहा है, जैसे हाइड्रोकेफलस होता है, फूल रहा है, या ये डिप्रेस हो रहा है, या ये जुड़ा नहीं है। एक हमारी फ्रंटल है जो हमारी माथे की है, तो यहाँ पे 2 पैराइटल है, कान के पास टेम्पोरल है और सर के पीछे ऑक्सीपिटल। इसी तरह जो चेहरा है इसमें तो और सारी बोन्स होती है, इसमें तो 14 बोन्स होती है, तो ब्रेन और फेस एक साथ ही रहते हैं, है ना, लेकिन ब्रेन का फंक्शन अलग है, फेस तो हमारा एक्सप्रेशन का एरिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्कल के डायरेक्टली अंदर ब्रेन नहीं है, स्कल के बाद कुछ झिल्लियां आती है, मेम्ब्रेन्स आती है, उन मेम्ब्रेन्स के अंदर ब्रेन है। तो कुदरत ने ब्रेन को कितना प्रोटेक्ट कर रखा है, एक बोन बॉक्स है, उसके नीचे 3 झिल्लियां हैं जिन्हें हम ब्यूरा ऑफ अरेक्नोइडोपाया कहते हैं,
ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कई बार हम कहते हैं कि बच्चे को मेनिंजाइटिस हो गई या एनकेफेलाइटिस हो गई, माँ बाप कहते हैं पहले ठीक था बच्चा, फिर दिमागी बुखार हुआ। फिर हम जानना चाहते हैं दिमागी बुखार वो मेनिंजेस तक, जो ऊपर की झिल्लियां है वहां तक ही कन्फाइन था, या ब्रेन के अंदर भी गया, या ब्रेन के अंदर टीबी हो गई। तो एरिया जानना जरूरी है कि उस एरिया जो अफेक्टेड है उसके हिसाब से डिसेबिलिटी भी आएगी अगर है। तो मेनिंजाइटिस कुछ नहीं है, ब्रेन के ऊपर जो झिल्लियां हैं उनमें इन्फेक्शन हो गया या उनमें सूजन आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। और ब्रेन के अंदर भी अगर इन्फेक्शन आया तो उसे एनकेफेलाइटिस कहते हैं। कई बार दोनों जगह इन्फेक्शन होता है तो मेनिंगो एनकेफेलाइटिस कहते हैं। ये टफ वर्ड लगते हैं, कंसेप्ट सिंपल है। ब्रेन का जो स्कल है, स्कल में कोई इन्फेक्शन नहीं होता, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्कल में तो सिर्फ इंजरी हो सकती है, टूट सकती है, लेकिन इन्फेक्शन नहीं होता। मेम्ब्रेन से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ब्रेन, जो भी हम विचार करते हैं हमारे ब्रेन में विचार आता है, जो भी हम फैसले लेते हैं वो हमारा दिमाग ही करके ले रहा है। जो हमारी याददाश्त है, जो भी स्मृति है वो भी ब्रेन में है, जो हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो भी ब्रेन में है। हम बात करते हैं, स्पीच बोल मुंह से रहे हैं, लेकिन स्पीच का फंक्शन ब्रेन में है। और कई बच्चे बोल नहीं पाते लेकिन समझ पाते हैं, है ना, अफेजियस होते हैं, बोल नहीं पाते, तो लैंग्वेज फंक्शन उनका इंटैक्ट तरीके से बता देते हैं। तो एक लैंग्वेज फंक्शन भी ब्रेन में है, कितनी बड़ी बात है। और अलग तरीके से कोडिंग होती है, जो हिंदी लैंग्वेज है, हाँ, जो फोनेटिक है उसकी कोडिंग अलग होती है। जो इंग्लिश है जो नॉन फोनेटिक है, क्योंकि उसमें साइलेंट वर्ड्स वगैरह होते हैं, उसकी कोडिंग अलग होती है। और जो चाइनीज, जैपनीज, पिक्टोरियल लैंग्वेजेस है, ब्रेन में उसकी कोडिंग अलग चीज होती है। तो इतना इंटरेस्टिंग है ब्रेन, लेकिन हम कई बार उसको नहीं समझ पाते। जो भी हम चलते हैं, हाथ चलाते हैं, काम करते हैं, मूवमेंट है, हम बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं, हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। कोई बॉल फेंकता है तो ऐसे लपक के पकड़ लेते हैं, चाबी फेंकता पकड़ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, ये सारा ब्रेन से आ रहा है। हमें जो भी परसेप्शन मिलता है, जो भी इंद्रियों से पता चलता है, वो भी ब्रेन से है। जो हमारी बॉडी काम करती है, डिफरेंट ऑर्गन्स काम करते हैं, हार्ट काम करता है, लंग्स काम करते हैं, हमारा टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, हम उसी टेम्परेचर में मेंटेन रहते हैं, ये भी ब्रेन से आ रहा है। और जो कभी भी कोई टेंशन होती है, या तो हम कई बार फ्रीज कर जाते हैं, या फाइट बैक करते हैं, या उस जगह से चले जाते हैं, ये सारा कुछ ब्रेन ही कर रहा है। लेकिन हम सोचते हैं कि व्यक्ति कर रहा है, व्यक्ति तो कर ही रहा है, लेकिन व्यक्ति के अंदर कौन सा ऑर्गन संचालित कर रहा है, वो ब्रेन कर रहा है। Next. जितने भी हमारी फाइल है टाइप की मल्टीमोडल इंफॉर्मेशन है, वो ब्रेन ही उसको ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करता है। यूजुअली मल्टीमोडल होते हैं, जो जैसे हम देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं तो आप मेरी आवाज भी सुन रहे हैं, तो आप दोनों चीजों को एक साथ परसीव कर पा रहे हैं। ऐसे जितने भी मैसेज मिलते हैं, गर्मी है, ठंड है, भीड़ में है, कोई बोल रहा है, कुछ हम देख रहे हैं, इन सबको सिंप्लीफाई करके ब्रेन कुछ इंटरप्रेट करता है। तो देखिए ब्रेन वही काम कर रहा है जो जिसकी अपेक्षा आप लोग वैज्ञानिकों से चाह रहे हैं कि वो सिंप्लीफाई करे। ब्रेन एक्चुअली सिंप्लीफाई कर देगा, बहुत सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन छोड़ भी देता है। जैसे इस हॉल में कुर्सियां किस कलर की है, उसका इस प्रयोजन से कोई लेना देना नहीं है, आपका ब्रेन उसको रिकॉल ही नहीं करेगा, कोडिंग ही नहीं करेगा। इस हॉल की कैपेसिटी कितनी है उतना भी आपको ध्यान नहीं रहेगा, हाँ उसमें 50 लोग होंगे। तो ब्रेन क्या करता है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है और उसको प्रस्तुत करता है, जिससे हम उसे समझ सकें, जिससे हम उसको याद कर सकें, या हम कोई एक्शन या डिसीजन ले सकें। तो ब्रेन एक बहुत अच्छा फिल्टरिंग भी करता है और सिंप्लीफाई करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब ब्रेन की बात क्या क्या करता है, लेकिन करता कैसे है। तो ब्रेन के 3 अंग हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम। मैं बहुत सिंपल करके बताऊंगी, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, तो बहुत टफ हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। 3 अंग है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम। बहुत और वे में भी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में भी क्लासिफिकेशन की गई है। 10 क्लासिफिकेशन मत याद कीजिए, सिंपल सिंपल याद।
मैं सबसे इजी से स्टार्ट करती हूँ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो है, नहीं उससे पहले, हाँ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम हमारे पूरा ब्रेन को हमारी पूरी बॉडी से कनेक्ट करता है। तो ऊपर के मैसेजेस नीचे पूरी बॉडी में संचालित होते हैं और बॉडी के मैसेज ऊपर संचालित होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑटोमेटिक फंक्शन उसके सेंटर ब्रेन में है। हमारा हार्ट क्यों बीट कर रहा है, उसको कौन निर्देश दे रहा है, ब्रेन में। हम हर समय सांस लेते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं होता ऑटोमेटिक ले रहे हैं। जब तक हम ध्यान ना दें तो हमें अपनी श्वास का नहीं पता चलता। प्राणायाम में पहले ब्रेथ अवेयरनेस सिखाते हैं, तो लेकिन ब्रेथ तो चल ही रही है जब से पैदा हुए और अंत तक। कौन संचालित कर रहा है, ब्रेन स्टेबल सेंटर। हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, हम सोते लगभग उसी टाइम है और जगते भी अपने आप उस टाइम में है। वो स्लीप एक साइकिल कहाँ से होती है, ब्रेन सेल से है। जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, खाना खाते समय अटकता क्यों नहीं गले में, हम फॉलो कर लेते हैं। कुछ गलत आ जाए तो हम कफ कर लेते हैं। नाक में कुछ प्रदूषण आ जाए तो हम छींक लेते हैं। ये सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं, वॉमिटिंग है, ये सारे भी ब्रेन स्टेम है। तो ब्रेन स्टेम बहुत पुराना हिस्सा है ब्रेन का। और एनिमल्स में भी सिमिलर होता है, सारे मैमल्स में भी सिमिलर होता है ना। तो ये जो ऑटोमेटिक चीजें जो बॉडी को संचालित करती हैं, जीवित रखती हैं, क्रियाशील करती हैं, ये सारा ब्रेन स्टेम है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। फिर एक है सेरिबेलम, जो हमारे हेड के पीछे की तरफ है, ऑक्सीपिटल लोब के नीचे। मैंने एक घेरा भी लगाया रेड कलर का। इसका काम कोऑर्डिनेशन, पोस्चर, बैलेंस, सिंपल सिंपल। कोऑर्डिनेट, हमारे दोनों हाथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक हाथ से दूसरा। हम जैसे रोटी बेलते हैं उसके बाद तवे पे डालते हैं, कोऑर्डिनेशन है। पोस्चर हम मेंटेन कर पाते हैं, गिर नहीं जाते। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें अनायास लोग गिर जाते हैं, या पीछे की तरफ या आगे की तरफ, साइड में। हम बैलेंस मेंटेन करते हैं। ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये मोटर फंक्शंस हैं, ये बैलेंसिंग फंक्शंस हैं, ये आपके सेरिबेलम से आते हैं। ठीक है, सिंपल है अभी तक, है ना। ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम हो गया। नेक्स्ट, अब सारा जो फोकस है वो सेरिब्रम पे ही जाएगा, क्योंकि सेरिब्रम ही हमें मानव बनाता है ना। हम मानव क्यों है, क्योंकि हमें बहुत सारी ह्यूमन बींग्स के पास बहुत सारी फैकल्टीज हैं, एंड एवरीथिंग सेरिब्रम। बाकी सब बाकी ऑर्गन्स मैमल्स में भी होता है। लार्जेस्ट है सेरिब्रम, इसके दो हिस्से हैं, राइट और लेफ्ट। ऐसा सिंगल नहीं है, एक्चुअली टू, और कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, जो कनेक्शन के फाइबर उन्हें हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। अगर कनेक्शन बीच में टूट जाए तो भी कुछ बीमारियां होती हैं, जिसमें कॉर्पस कैलोसम डिसऑर्डर मिलते हैं। राइट ब्रेन की इंफॉर्मेशन लेफ्ट को नहीं मिलती, लेफ्ट की राइट को मिलती है। राइट ब्रेन इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता है लेफ्ट ब्रेन पे, लेफ्ट ब्रेन इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस करता है राइट ब्रेन। तो दोनों बैलेंस का रहता है। जो भी हमारे हायर फंक्शंस हैं, टच को हम इंटरप्रेट करते हैं। एक बच्चा हाथ पकड़ लेता है, हम उसको अलग इंटरप्रेट करते हैं, है ना। एक कोई स्ट्रेंजर हाथ पकड़ लेता है, पकड़ा तो हाथ ही है, हम उसको अलग इंटरप्रेट करते हैं। विजन को हम क्या देख के क्या उसका अनुमान लगाते हैं, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा ब्रेन ही कर रहा है। अगर कोई बच्चा एक किताब से लेके कॉपी में लिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कितना सिंसियर बच्चा है ना, देखो किताब से लिख रहा है। दूसरे कहेंगे बच्चे में क्रिएटिविटी नहीं, कॉपी कर रहा है। इंटरप्रिटेशन सेरिब्रम से आती है। हमारी स्पीच, लैंग्वेज, जो हम रीजन करते हैं, हम हमेशा कहते हैं संवाद स्थापित कीजिए, बातचीत कीजिए। बातचीत में क्या होता है, हम पक्ष और विपक्ष दोनों बातें की और सामंजस्य करते हैं, रीजनिंग करते हैं। तो रीजनिंग का है, हमारे ब्रेन से है। हम प्लान करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान करते हैं, आज क्या करना है। मिड टर्म प्लान करते हैं, अगले 3 महीने में क्या करना है। लॉन्ग टर्म, 5 साल में घर बना लेंगे, दैट प्लानिंग, वो भी ब्रेन से आ रही है। जितने हमारे जज्बात हैं, क्योंकि कई बार जो मरीज और उसके घर वाले बड़े दुखी हो जाते हैं कुछ भावनाओं से। क्रोध उसमें एक भावना है, लेकिन हमारे लिए ऐसा कैटरिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, वो भी एक भावना है। जैसे सैडनेस एक भावना है, वैसे एंगर भी एक भावना है, और उसका भी इलाज होता है। उसका फार्माकोलॉजिकल दवाई से भी और काउंसलिंग से इलाज होता है। जो हमारी स्थिति और हमारी सीखने की क्षमता है, वो भी ब्रेन से ही है। और जितना फाइन कंट्रोल मूवमेंट होता है, ग्रॉस कंट्रोल सेरिबेलम होता है, फाइन कंट्रोल है। जैसे हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, छोटा छोटा काम हाथ से करते हैं, बटन लगाते हैं, ये सारा सेरिबेलम से है।
नेक्स्ट, दो जो हाफ है, जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है राइट, वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को संचालित करता है, जो लेफ्ट है वो राइट को करता है। तो अगर राइट की तरफ कोई नस ब्लॉक हो गई या कुछ इन्फेक्शन हो गया, चोट लग गई, तो लेफ्ट में असर आएगा, और लेफ्ट की तरफ होता है तो राइट में आएगा। ठीक है, कंसेप्ट, क्योंकि फाइबर्स क्रॉस करते हैं। अब बीच में कॉर्पस कैलोसम है जो इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, क्लियर, राइट एंड लेफ्ट। नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन फिर भी कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो लेफ्ट ब्रेन के ही हैं, और कुछ फंक्शन है जो राइट ब्रेन के ही है ना। मोस्ट ऑफ अस राइट हैंड प्रिडोमिनेंट होते हैं। बहुत सारे लोग जो लेफ्ट हैंड प्रिडोमिनेंट होते हैं उन्हें कल्चरली राइट हैंड प्रिडोमिनेंट बना दिया जाता है, क्योंकि समाज में लेफ्ट हैंडर्स को अच्छा नहीं समझते, तो वो सारे मोस्टली लेफ्ट ब्रेन प्रिडोमिनेंट है, क्योंकि राइट हाथ से तभी लिखेंगे ना जब लेफ्ट होगा। तो हम हैंडेडनेस भी देखते हैं कुछ बीमारियों में, और फिर भी हम अनुमान लगाते हैं कि कई बार ऐसा होता है हैंडेडनेस राइट है क्योंकि कल्चरली सीधे हाथ पे पेन पकड़ाया गया, सीधे हाथ से खाना खिलाया गया, नहीं तो वो बच्चा हो सकता है लेफ्ट हैंडेड भी नहीं। लेफ्ट हेमिस्फीयर में हमारी स्पीच है, कॉम्प्रिहेंशन है, जो मैं बोल रही हूँ आप समझ पा रहे हैं, जितने मैथमेटिकल टास्क हैं जो हम लिखते हैं वो सारा लेफ्ट में है। राइट ब्रेन में हमारी क्रिएटिविटी है, म्यूजिक है, आर्ट्स है। तो कई बार हम ये वाले भी काउंसलिंग देते हैं कि अच्छा बच्चा ये वाले टास्क नहीं कर पा रहा, मैथमेटिकल टास्क नहीं कर पा रहा, एक्सप्लोर कि आपका बच्चा म्यूजिक, डांस, क्रिएटिविटी, आर्ट, पेंटिंग ये कर पाते हो कि हाँ ये बहुत अच्छे से करता है, तो वहां पे क्षमता है। ब्रेन एक यूनिटरी नहीं है कि एक चीज अच्छी नहीं है तो दूसरी जगह भी कोई स्कोप नहीं है, विकल्प नहीं है, दूसरी जगह हो सकता है बहुत अच्छा भी बच्चा काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो ये सेरिब्रम है इसके अंदर 4 लोब्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा आहिस्ते आहिस्ते जा रहे हैं। हमने पहले ब्रेनस्टेम किया जो ऑटोमेटिक बिहेवियर, ऑटोमेटिक फंक्शन को गवर्न करता है, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन, मोटर थिंग्स को सेरिबेलम करता है। अब फिर हम सेरिब्रम में आए, उसके 2 हेमिस्फीयर थे, अब दोनों हेमिस्फीयर में फिर हमारे 4 लोब आ गए। ठीक है, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल माथे के पास वही वाली जैसे अपनी बोन की मैंने बताया था, स्कल की बोन है, फ्रंटल है तो फ्रंटल बोन के पीछे फ्रंटल लोब है, ऊपर पैराइटल बोन के पीछे पैराइटल लोब है, कान के पास टेम्पोरल लोब है, पीछे ऑक्सीपिटल लोब है। ठीक है, और ये सब लोग ऐसा नहीं है कि अकेले कार्य करते हैं, सब लोग मिलजुल के सामंजस्य में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो जो फ्रंटल लोब है ये लार्जेस्ट लोब है, और यही हमें मानव को मानव बनाते हैं, क्योंकि हमारा फ्रंटल लोब काफी बड़ा होता है, और जो गोरिल्लास एंड चिंपैंजीज उनका फ्रंटल लोब कम होता है। फ्रंटल लोब में आपकी पर्सनालिटी, बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कुछ फ्रंटल लोब में। लॉट ऑफ बॉडी मूवमेंट, इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियस, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ इस पोजीशन पे हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, सारा फ्रंटल लोब इंटरप्रेट कर रहा है कि मैं टॉक दे रही हूँ, ऑडियंस रिस्पॉन्ड कर रही है, नहीं कर रही है। ये फ्रंटल लोब कंटिन्यूअसली इंटरप्रेट करता है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डिसीजंस लेते हैं हम, जो हम कहते हैं हाँ उसका व्यक्तित्व है, बॉडी में कहाँ है व्यक्तित्व, वो ये माथे के पीछे। नेक्स्ट, फिर हमारा पैराइटल लोब आता है, ये सारे सेंसरी मोटर सारे सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है। जैसे जितने सेंसरी इनपुट्स हैं उनको इंटरप्रेट करेगा। हम एनवायरनमेंट को, हम एनवायरनमेंट में कहाँ है, फिगर ग्राउंड अफेयर में पोडियम पे खड़ी हो, है ना, जो कुछ भी हो रहा है उसका इंटरप्रिटेशन पैराइटल लोब करता है। यहाँ से मोटर एरिया भी आता है, तो मोटर एरिया सारे मोटर फंक्शन को संचालित करता है। नेक्स्ट, Then we have temporal function, बोलने वाला होता है पैराइटल लोब में, लेकिन समझने वाला लैंग्वेज का होता है टेम्पोरल लोब में, है ना, एरिया अलग है। जो मेमोरी में रिकॉग्निशन रिकॉल है, हम कितने दिन बाद में मिले और हम पहचान ले हाँ डॉक्टर श्रुति है, तो कैसे होता है, क्योंकि मिले तो इतने दिन बाद है, क्योंकि ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये व्यक्ति को हम पहले जानते थे और ये व्यक्ति डॉक्टर श्रुति है। कई बार क्या होता है कि हमें पहचान है लेकिन नाम नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर भी रिकॉग्निशन होती है ना। बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, उनसे पूछो माँ को पहचानता है, हाँ माँ को पहचानता है,
कुछ भी होता है माँ के पास ही जाता है। तो ये हम कहाँ से हम क्या चेक करें, टेम्पोरल लोग सही है, रिकग्नाइज कर पाता है। हम कई बार पैसे दिखाते हैं, पैसे रिकग्नाइज कर पाता है, कागज दे देते हैं, बच्चे कागज फेंक देता है, रिकॉर्ड। देन हियरिंग, जो भी हम सुनते हैं जितनी श्रुति है वो आपकी टेम्पोरल लोब है, जो सीक्वेंसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग है वो है। फिर एक कंसेप्ट है, मैं बिल्कुल ब्रीफली टच करूंगी, इमोशनल इंटेलिजेंस का, कि हमें हमारी भावनाएं भी बताओ, हम दूसरे की भी भावनाएं समझ सकें और हम मॉड्यूलेट कर सकें अपनी भावनाओं को भी और दूसरे की भावनाओं को भी। तो ये जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर पर्सन्स इमोशंस की, अब माँ गुस्से में है, या अब माँ प्यार कर रही है, या अब माँ ने खाली छोड़ दिया है, या अब जो माँ है वो कुछ एक्सपेक्ट कर रही है। तो वर्बली नहीं, नॉन वर्बली भी बच्चे पढ़ लेते हैं, हम भी पढ़ लेते हैं कि हाँ बॉस की ना ये एक्सपेक्टेशन है, बॉस नाराज है ना, या बच्चे ना दुखी है, पता करते हैं क्यों दुखी है, लेकिन समझ लेते हैं। तो इंटरप्रेटिंग अदर पीपल्स इमोशंस, ये भी हमारा टेम्पोरल हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। और ऑक्सीपिटल सारा विजन का काम करता है, क्या कलर है, क्या साइज है, क्या शेप है, दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं जैसे मेरा फोन रखा है और माइक है, ये कितनी दूरी पे है, दो चीजों में कितनी दूरी है, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, मैं ऊपर हूँ और आप लोग पोडियम के नीचे हैं, ये सारा जो अंडरस्टैंडिंग है, ये विजुअल स्टिमुलाई तो ब्रेन में जा रहा है, मतलब एक पिक्चर की तरह ब्रेन में नहीं, लेकिन ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है, इंटरप्रेट ब्रेन कर रहा है। जितना भी रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स है, कुछ साइकोलॉजिकल टास्क होते हैं उसमें हम फिगर ग्राउंड इफेक्ट देखते हैं कि बच्चा फिगर को पकड़ है ग्राउंड को या कंफ्यूज होता है ना। और डेप्थ परसेप्शन, गहराई कितनी है, चोट इसीलिए लग जाती है, पता ही नहीं चलता कि कितना डिस्टेंस है ना। एंड इवन मूवमेंट, चीज मूविंग ऑब्जेक्ट है या स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, जैसे बॉल फेंकते हैं तो बच्चों को समझ में आ रहा है बॉल फेंक दी है ना, स्पिन, या नहीं समझ में आता है ना, स्पिन। देन जो सरफेस है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, कुछ सेरेब्रम की सरफेस को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ये ऐसे ना थोड़ा इसमें रिंकल्स टाइप होते हैं ऐसे, आप समझिए जैसे हिल सेल वैलीज है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसमें 16 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। सेरेबेलम इससे छोटा है लेकिन उसमें करीब 70 बिलियन होते हैं, उसमें न्यूरॉन ज्यादा होते हैं, ब्रेन में थोड़े कम होते हैं लेकिन रीजनरेट करते हैं, सिनेप्सेस होती है, न्यूरॉन प्लास्टिसिटी होती है। जो न्यूरॉन की बॉडी है वो थोड़ी ग्रे कलर की होती है, तो उस पूरा एरिया थोड़ा ग्रे नजर आता है, उसे कहते हैं ग्रे मैटर। और न्यूरॉन की जो एक्सॉन है जो उसकी शाखा की तरह है वो व्हाइट नजर आती है, तो उसे कहते हैं व्हाइट मैटर। तो कई बार एमआरआई में लिखा होता है व्हाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटी, वो कहते हैं ब्रेन के अंदर सफेदी कहाँ से है, कुछ नहीं है, ये न्यूरॉन की बॉडी के जो एक्सॉन्स है उसमें कोई डेफिसिट होगा। नेक्स्ट, दो तरह के ब्रेन सेल्स होते हैं, एक तो नर्व सेल्स होते हैं जो मतलब किंग है, इतना प्रेशियस सेल होता है, और दूसरे नर्व सेल को सपोर्ट करने के लिए भी सेल्स होते हैं जो उनको न्यूट्रिशन देते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हम स्कैफोल्डिंग बनाते हैं घर की, बांस के बनाते हैं ना, फिर उसके बाद इमारत चलती है, ऐसे ब्रेन के अंदर भी स्कैफोल्डिंग है, उसको हम ग्लैंड सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट, फिर एक हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है, ये इमोशंस को गवर्न करता है। तो लिम्बिक सिस्टम ये इसमें दोनों सेरेब्रम के बीच की तरफ है ना, दो सरफेस में नहीं है, सरफेस पर कॉर्टेक्स है, बीच की तरफ है। इसमें एक हिप्पोकैम्पस होता है जिसमें जो मेमोरी से रिलेटेड है, बहुत सारी मेमोरी स्टोर होती है, एक एमिगडाला है जो इमोशन का सेंटर है, इमोशंस वगैरह। तो कई बार हम उस वे में भी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, फिर इंसुलर लोब्स होते हैं, ये नीचे की तरफ है ब्रेन में, अगर हम ऐसे देखें कोशिका तो ये ब्रेन में ऐसे नीचे की तरफ बीच में, ठीक है। इतनी सेंसिटिव प्रोसेसिंग है ओवरऑल, जितनी प्रोसेसिंग है इंसुला में होता है बिफोर इट गोज टू फ्रंटल। नेक्स्ट स्लाइड। फिर थैलेमस है, क्योंकि कई बार आपको कोई कहेगा थैलेमिक इन्फार्क्ट हो गया था, उसके बाद परसिस्टेंट पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो थैलेमस है वो स्विच बोर्ड है, जितनी इंफॉर्मेशन पेरिफेरी से जा रही है
फ्रंटल लोब तक वो थैलेमस के रास्ते से ही जा रही है। जैसे चौकीदार होता है ना, थैलेमस इज लाइक द चौकीदार, उसके थ्रू ही सबने जाना। फिर एक हाइपोथैलेमस है, जितने हमारे हार्मोनल फंक्शंस हैं, जितने हमारे हमें कब भूख लगती है, प्यास लगती है, हम सोते हैं, ये सब हाइपोथैलेमस, वो नीचे वाला घेरा हाइपोथैलेमस है। तो जो संरचना है ब्रेन की वो बड़े हिसाब से है। हर चीज ब्रेन में एक सेंटर है और कई चीजें कई सेंटर मिलजुल के सामंजस्य से करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पिट्यूटरी ग्लैंड है, कुछ पिट्यूटरी के हार्मोन्स रिलीज करता है, और हम देखते हैं बच्चों में ड्वार्फिज्म है या डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोनल डिसऑर्डर जो सेंटर है। और एक बेसल गैंग्लिया है, ये कुछ नहीं, एक एरिया है ब्रेन का, ये भी ऐसे मध्य में है और सेंटर में है बिल्कुल। आप ऊपर वाले घेरे में देख सकते हैं, इसमें सारी चीजें कंट्रोल होती है, मूवमेंट, मोटर, लर्निंग। अगर आप टेनिस खेलते हैं तो आपको पता है बॉल स्पिन से आ रहे हो, इस पे आपने मारना है तो वो सही जाएगी। क्रिकेट खेलते हैं तो हाउ डज की बॉल हिट करेगी, टप्पा आएगी, उसके बाद आप मारेंगे और फिर सिक्सर जाएगा। देख सकते हैं तो क्यों बेसल गैंग्लिया बिल्कुल सेंटर में है, और इसमें सारे नर्व फाइबर से निकलते हैं, मोटर फाइबर, सेंसरी फाइबर। अगर इसमें कोई डेफिसिट होती है तो उसमें ज्यादा क्षति होती है, क्योंकि अगर एक छोटी सी गली है उसमें से सब कुछ जाना है, अगर वहीं पे ब्लॉकेज आ जाएगी तो ज्यादा डिफेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। फिर एक ब्रेन स्टेम में एक रेटिकुलर फॉर्मेशन है। हम क्यों अवेयर हैं, कब हम बेहोश होते हैं, कब हम अनिद्रा में होते हैं, कब हम जगते हैं, हम कब कॉन्शियसनेस के जो लोग योग जानते हैं तो वो स्टेट्स हैं, तुरीय है ना, समाधि, ये सब स्टेट्स क्या है, ये सब रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम रात के थ्रू है। ठीक है, कैसे हम फोकस करते हैं, कुछ लोग कहते हैं बच्चा फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है बच्चा, कहाँ है फोकस, फोकस रात में। हमारी जो चेतना है पूरा, ठीक है, रेटिकुलर एक्टिविटी। नेक्स्ट, तो जितने स्लीप फंक्शंस, ऑटोनॉमिक फंक्शन, ये सारे ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट, फिर कुछ क्रेनियल नर्व्स है। अब ब्रेन कैसे मैसेज भेजता है, तो हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स होती है ना। नेक्स्ट साइड आते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट नर्व है उससे हमारी जो स्मेल है, सूंघने की शक्ति है, वो हमारी फर्स्ट नर्व है, ये नोज तक जाती है। ठीक है, जो हम अच्छे से बारीक देख पाते हैं, विजुअल एक्टिविटी, वो हमारी सेकंड नर्व है। हमारी आई की बॉल्स हिल सकती है ना, हम बिना फेस टर्न किए अपनी बॉल्स को लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, वो हमारा थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स है ना। थर्ड फोर्थ ऊपर नीचे भी हम कर सकते हैं और साइड में भी कर सकते हैं, तो ये हमारे थर्ड फोर्थ सिक्स है। जितना हम फेस पे, त्वचा पे कोई भी सेंसेशन फील करते हैं, थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन हमारी फिफ्थ नर्व से आता है, बाकी फेशियल एक्सप्रेशन हमारी सेवंथ नर्व से आता है। हम फोरहेड रिंकल कर पाते हैं बातों ऊपर करके, हमारी सेवंथ नर्व है। हम बैलून की तरह मुंह को फुला पाते हैं, सेवंथ नर्व है। ट्रम्पेट ब्लो कर सकते हैं, बांसुरी बजा सकते हैं, तो आपकी फेशियल मसल में सेवंथ नर्व यूज होती है। जो आठवीं नर्व है ये हियरिंग को भी देखती है, और यहाँ किसके बोलते वेस्टिबुलर है ना, बैलेंस को भी देखती है। नवीन नर्व आपके बैलेंस को भी देखती है और टेस्ट को भी देखती है। सेवंथ नर्व भी आपका थोड़ा टेस्ट देखती है। जितना हमारे थ्रोट का सेंसेशन है, swallowing है, हार्ट रेट है, स्वेटिंग है, सोलर प्लेक्सस का जितना है, वो हमारी 10th नर्व करती है। 11th नर्व हमारी हेड मूवमेंट और शोल्डर मूवमेंट, हम कई बार बच्चों की शोल्डर चेक करते हैं, है ना। और जो हाइपोग्लॉसल नर्व, एक्चुअली के बहुत सारे काम है, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करके बता दूं क्योंकि बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो टंग मूवमेंट है, कई बार हम कैसे कहते हैं कि अच्छा मुंह खोलो और जबान बाहर निकाल के दिखाओ, तो आप कहते हैं ये क्या, ये क्या टेस्ट हो रहा है, बट एक्चुअली हम 12th नर्व टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। फिर अगर दिमाग है तो उसको खून का दौरा भी जाना चाहिए, है ना। पूरे शरीर में खून के दौरे का संचालन होता है, तो ब्लड सप्लाई है दोनों तरफ से आती है, हमारी कैरोटिड आर्टरीज लेके जाती है, पीछे से भी जाती है, और ब्रेन में एक इस तरह का जाल बना देती है कि अगर माइनर ब्लॉकेज एक तरफ भी हो तो दूसरी तरफ कवर कर लेती है, क्योंकि सेंटर ऑफ ब्रेन में एक सर्कल ऑफ विलियस होता है,
तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट ब्लॉकेज से है, लेकिन अगर मेजर ब्लॉकेज है तो फिर पैरालिसिस होगा, लेकिन अगर माइनर ब्लॉकेज है तो कवर भी हो जाता है। नेक्स्ट, फिर दिमाग के अंदर कुछ खाली स्पेस भी है, ऐसा नहीं सारा दिमाग भरा हुआ है, खाली स्पेस भी है, उसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। वो लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल होते हैं, और उनके अंदर ऐसे कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं जो एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, उसका नाम CSF होता है। कई बार जब मेनिंजाइटिस होती है तो हम CSF का सैंपल कमर से, पीठ से निकाल के उसकी चेकिंग करते हैं। CSF ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना, और CSF हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करने के लिए है ना, और ये कॉन्स्टेंटली जनरेट भी होता है, एब्जॉर्ब भी होता है, लेकिन अगर ब्लॉकेज आ जाए तो ज्यादा CSF हो जाएगा, ज्यादा CSF हो जाएगा तो भी ब्रेन पे प्रेशर पड़ जाएगा, है ना, तो हाइपोटेंसिस वगैरह होता है, तो वो CSF के कारण है। अब आप कहेंगे प्रेशर कहाँ से आ गया, प्रेशर इसलिए क्योंकि फ्लूइड भी है, ऐसा नहीं है कि ब्रेन एक सॉलिड ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट, अब इतना सब जानना क्यों जरूरी है, इतना सारी पढ़ाई करना क्यों जरूरी है, क्योंकि 6 में से एक इंसान को कोई ना कोई ब्रेन कंडीशन है, तो 6 में एक तो मतलब हमारे अपना खुद का परिवार हो गया ना, 4 लोग 6 लोग तो होते ही हैं। जो भी डिसऑर्डर है वो कौन सा एरिया अफेक्ट हुआ और वो एरिया का क्या फंक्शन था, उसी हिसाब से लक्षण आए, है ना। अगर एरिया पहला अफेक्ट हुआ तो उसके पहले फंक्शन अफेक्ट हो गए तो पहले तरह के लक्षण है, दूसरा एरिया अफेक्ट हुआ तो दूसरे तरह के फंक्शन है तो दूसरी तरह के आएगा। अगर किसी का ऑक्सीपिटल लोब अफेक्ट हुआ तो उसको देखने में प्रॉब्लम आएगी, जिसे हम सेंट्रल ब्लाइंडनेस कहते हैं, और अगर पैराइटल लोब हुआ तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ सकती है, अफेंजर्स आ सकते हैं। तो जो हम फिर रिवर्स जाते हैं, हम देखते हैं लक्षण, फिर हमें पता होता है कि कौन सा एरिया ऑफ द ब्रेन है, फिर हम उस एरिया ऑफ ब्रेन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसी तरह जब हम थेरेपीज करते हैं या इलाज मेडिसिन से लिखते हैं, हम देखते हैं वो एरिया ऑफ द ब्रेन क्या है, उसी को स्टिमुलेट करते हैं। जो पहले सेशन में बात हुई थी कि हम स्टिमुलेट करते हैं तो नर्व सर्किट चेंज होते हैं, न्यूरॉनल ट्रांसमिशन होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन हर चीज रिवर्स हो जाएगी ऐसा भी नहीं है, और हर चीज खराबी रहेगी ऐसा भी नहीं है। तो एक फाइन बैलेंस है कि हम प्रयास करें कि काफी चीजें इंप्रूव हो सकती है, जो चीजें अच्छी हैं उनको और हम अच्छा कर दें, सो दैट दे कैन कंपनसेट फॉर डेफिसिट्स, है ना, और जो डेफिसिट्स हैं वो थोड़ी मैनेजेबल होते हैं। तो ये रोल रहता है हर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का। जितने भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, ऑटिज्म, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, डिमेंशिया, पार्किंसन, ये हमारी आर्टिफिशियल विधाएं हैं, लेकिन ब्रेन एक ही है। ऐसा नहीं उनका ब्रेन कोई और है, आप कोई और ब्रेन में काम करते हैं, या हम सिर्फ माइंड में और पता नहीं साइकी में काम करते हैं। अब एवरीथिंग इज साइंटिफिक, एवरीथिंग इज इन द ब्रेन। तो जितना स्ट्रोक, एपिलेप्सी, ब्रेन ट्यूमर, पार्किंसन, हेड इंजरी है, वो सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में है, लेकिन उनके भी साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि ब्रेन तो एक ही है ना। और जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स है उसमें भी कई बार न्यूरोलॉजिकल सीक्वेली आ जाती है या दवाई के कारण आ जाती है। तो जब तक हम दिमाग को नहीं समझेंगे तो हम बड़ा मिस्टीरियस फील करते रहेंगे, पता नहीं ये कौन सी चीज है, ये क्या होता है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझे तो इजी रहता है। So that is where I end. Is there any question? So indeed a very lucid presentation. So please raise your hands, those of you who have not understood. There is no one. Those of you who have understood, please raise your hands. जिनको समझ में आया लेक्चर, जिनको दिमाग, बुद्धि, खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, सबके बारे में समझ आया। अच्छा, अब कुछ सवाल जिससे आप सभी लोग थोड़ा इन्वॉल्व हो, है ना। तो पहले मैं इस तरफ के लोगों से पूछती हूँ, कुछ सवाल पूछिए।
बेझिझक अपने को पहले इंट्रोड्यूस करिए और फिर सवाल पूछिए, हमारे पास अभी है कुछ समय। Hi, good afternoon. I'm Sarin. So आपने brain के बारे में भी बताया about CNS and PNS, right? So CNS has two parts, brain and the spinal cord. But what exactly is the peripheral nerves? The spinal cord is connected to all our body nerves. So आपको बस overview दे दें उस बारे में. PNS है वो part of spinal cord से जितनी nerves आगे जाती हैं, that is all peripheral. तो spinal cord से दो तरह की nerves जाती हैं, एक तो मोटर फंक्शन, सेंसरी फंक्शन जो हमारी मसल्स में जाती हैं, पूरी बॉडी में जाती हैं, और कुछ विजुअल नर्व्स में जाती हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को जाती है। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा है वो सारा कुछ पेरिफेरल है। तो वी आर ऑल कनेक्टेड, बट ये एक डिवीजन है क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अपने आप में ज्यादा एक्शन लेते हैं, वो रिफ्लेक्शन वगैरह हो जाते हैं, वो पेरिफेरल पे ही हो जाते हैं एट द लेवल, बट जनरली एवरीथिंग कम्स टू द ब्रेन। जैसे वो सरकारी होता है ना, फाइल बॉस के पास जाएगी और पीछे आएगी, तो ऐसे मोस्ट इन्फॉर्मेशन गो टू द ब्रेन। पर बहुत सारी कुछ ऐसी टेस्टिंग है रिफ्लेक्शन जो स्पाइनल लेवल पे या पेरिफेरल लेवल पे भी यूज हो जाती है। Operant difference. आपके Communicate. हाँ करेंगे। Peripheral nervous system will do the job of communication. Yes, yes. So yes, please introduce yourself. Sure. My name is Dr. Naveen Bhuller. और इतना सरल आपने जो बताया ब्रेन नर्वस सिस्टम का ओवरव्यू मैंने आज तक नहीं सुना। मैं सोचा कि बिजनेस पर हिंदी हूँ मेडिसिन में, तो बहुत ही खूबसूरत और इतनी अच्छी हिंदी, इतनी सरल हिंदी, इसके लिए मैं आपकी सराहना करना चाहती हूँ। Yes, I can see many young participants. Please raise questions this side first. जैसे एक मैं कमेंट बोलूँ कि प्रोफेसर के कमेंट में बोलूँ कि जैसे डॉक्टर देसाई सर ने कहा ना, डीमिस्टिफाई करना है, हमें कई बार मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए भी, एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए भी डीमिस्टिफाई करना है। इतना हवा बना लिया, ब्रेन का केस आ गया, सीएनएस लॉन्ग केस आ गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, या रिएक्टिव वायरल में ब्रेन पूछ लिया, तो देखिए ये सिर्फ सुपर ब्रिलियंट लोगों के पढ़ने के लिए है, बाकी सब ना ऑप्शन में दूसरे क्वेश्चन आंसर करेंगे, बट एक्चुअली सिंपल है, पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आप इंट्रोड्यूस करिए पहले। I am Bharti Sharma. I am professor here in Delhi only, and I have just then I have just seen the flyer of the program, और मैं निमेश सर को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो मुझे लगा कि शायद इसमें कुछ सिंसियरिटी होगी, there would be some content, there would be some potential कि भी इसको अटेंड किया जाए प्रोग्राम को, अदरवाइज मतलब क्यों करें, मतलब बट आपका लेक्चर और सुबह से जो भी डिस्कशन है और डिस्कोर्स है उसका ब्यूटीफुल, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपका लेक्चर जो था आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हम कैसे 11th-12th में मतलब ये जो साइंस एंड देन स्टार्टेड आवर करियर, तो एक बहुत अच्छा रिव्यू है, और आपकी लैंग्वेज इतनी सरल है, वो तो मैम ने कहा, इट्स वेरी यूसेज, इट्स वेरी ब्यूटीफुल की समझाने का आपका इनर कोर से आप बताना चाह रही थी, आपने यू हैव नॉट इंटरप्रेटेड द थिंग्स टू मेक योरसेल्फ एज अ orator, speaker, तो ये एक्चुअली अंदर सोच है, वरना हमारे यहाँ कहा जाता है कि if you are a professor, leave the things complicated. You are not be the professor. If you are a researcher, we are the researcher also. PhD के student हमारे अंदर निकल चुके हैं. So the title should be very complex. It can never ever be simple. Otherwise लोग कहेंगे ही नहीं क्या बोलते। तो इसके पार्ट आपने इतनी सरलता से सहजता से चीजों को बताया है, तो उससे टारगेट हमारे मतलब है अचीव होते हैं जीवन के। तो इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी, ऑर्गेनाइजर तो है ही, सर भी इतने सरलता से चीजें कर रहे हैं, निमेश सर वेरी वेरी थैंक यू। यस, मैं और श्रुति दोनों सर के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने थोड़ा बहुत जो सीखा है, सर ने तो बहुत सिखाया, लेकिन शायद हम थोड़ा बहुत ब्लेंड कर पाए। नहीं, पर हम ये जरूर कहेंगे, आज से 20 साल पहले जो सर ने हमें पढ़ाया, हमने सर के सवाल और जवाब
दोनों ही याद है, दोनों को ही। Yes, तो yes. उसका जो इम्प्रिंट है, जो ये ब्रेन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, उसका इम्प्रिंट जो है वो दिमाग में रहता है। और फायदा यही है कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी हम जैसे आगे भी सब इसमें कार्यक्रम में भी बार बार यूज करेंगे, तो वो सर पे जो बात सुबह डॉक्टर सविता मल्होत्रा लगाया तो उसकी जड़ें फैलती जाती जमीन में। नीम का एक पुराना पेड़ या बरगद का पुराना पेड़ आप देखो तो उसकी जड़ें जमीन में फैलती जाती हैं। इसी तरीके से हमारे दिमाग में भी नसें बनती चली जाती हैं और उनके आपस में कनेक्शन भी बनते चले जाते हैं, लिंक भी बनते चले जाते हैं। तो इसीलिए आज का ये जो मैडम ने बहुत ही सरलता से इसको समझाया, ये एक्चुअली में हम लोग मेरे मेरे को भी काफी रिवीजन हुआ, क्योंकि मेरे से अगर पूछ लिया जाता है ऐसे ही चेयर पे उल्टा कर दो, सर कहते हैं कि यहाँ उल्टा हो गया, तो भैया ये तो मेरे लिए तो मुश्किल था। मुझे तो इन्होंने जो आज पढ़ाया तो मेरा भी रिकैप हुआ, मेरे भी कनेक्शन से पुराने वाले से आज का ये इनका जुड़ गया। तो इसलिए जो है हमें सबको ये नहीं कि जो बच्चे दिमाग की बीमारियों से पीड़ित है सिर्फ उनके लिए, लेकिन ये एक जनरल पब्लिक के लिए भी मैसेज है कि आप निरंतर अपने कनेक्शन बनाए रखें। गप का कनेक्शन भी बना के रखना जरूरी है, असली गप का कनेक्शन बना के रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम यहाँ पे अभी हाइब्रिड मोड में भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी बातचीत सुन रहे हैं, लेकिन जो वजह हम लोग यहाँ पे आपस में एक दूसरे के चेहरे देख के अनुभव ले रहे हैं वो लोग मिस कर रहे हैं, तो उनका वो कनेक्शन हट रहा है, लेकिन वो फिर भी तथ्य की बात सुन पा रहे हैं, तो तथ्य तो उन तक पहुंच रहा है। लेकिन जो यहाँ पे हमारी आपस की जो चेहरे की हंसी, चेहरे की क्लैपिंग या वो उनके पास गूंज जा रही है, लेकिन हम आपस में इसका पूरा आनंद उठा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन शैली में दोनों ही चीजों का कनेक्शन बनाते रहने का, मिलते जुलते रहने का, और मैडम ने बहुत रिसर्च करी है, इनका बहुत अनुसंधान है, डिमेंशिया पे बहुत ही इनका योगदान रहा है। तो ये यही कहेंगी कि डिमेंशिया को रोकने के लिए भी मैं इनसे ये काफी मेरी मित्र है, तो हम लोग काफी एक डेढ़ घंटा गप्पे मारते हैं। गप्पे मारना मतलब सिर्फ गप्पे, मतलब उसमें कोई तथ्य नहीं निकलता। डेढ़ घंटा फोन पे बात करने के बाद जब फोन रखते तो सोचते कि बात कर क्या रहे थे, टॉपिक क्या था, कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ खत्म किया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कनेक्शन, हर चीज का कनेक्शन जो है वो जोड़ती है, और यही जो है इंसान है ना, सोशल कनेक्टेडनेस की जरूरत है। तो यही जो है हमारे जो बच्चे हैं जो दिमागी बीमारियों से पीड़ित हैं, या जिनको डिमेंशिया या उस टाइप की कोई भी मानसिक बीमारी, जो मैडम ने इतने सारे सर्किट बताए ऊपर से लेके नीचे तक, हेड टू टो, कहीं पे भी किसी भी तरह की नसों से संबंधित, जो उन्होंने पूछा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से संबंधित, स्पाइन हमारे बैक से संबंधित या हमारे दिमाग से संबंधित किसी भी संबंध की दिमागी बीमारी है, उसमें अगर हम वर्जिश करेंगे, आपस में उसको चलाने की, उस हिस्से को चलाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा उसमें जो है रिकवरी फास्ट हो। तो दवाइयां तो एक तरीके का इलाज है ही, लेकिन उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो भी बहुत ही बढ़िया कार्य करती हैं, और यही है रिहैबिलिटेशन का एक उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। और मैडम ने जो अनुसंधान डिमेंशिया पे किया, अगर उनसे एक मिनट को समझे कि डिमेंशिया की रोकथाम के लिए क्या ये एक संक्षिप्त तरीके से, या किसी भी मानसिक बीमारी की, बच्चों से संबंधित मानसिक बीमारी का टॉपिक है, तो बच्चों से संबंधित मानसिक बीमारी के लिए एक सिंपल तौर पे आप ये समझे कि ये जो आज जो चीज समझाई गई वो एक बेसिक है, वो एक ढांचा है। वो ढांचा बहुत ही जरूरी है कि आप उसको दिमाग में स्पष्ट तरीके से अपने बिठाएं, उसके बेसिस पर आप आगे बीमारियों के बारे में और उनके इलाज से संबंधित चीजें जोड़ पाए। तो अगर हमें बेसिक ढांचा कहीं नहीं समझ में आएगा तो हम उसकी बीमारी क्या है और उसके लिए कौन सी जांच चाहिए, हम पैसे उसमें लगाते जाएंगे और हमें पता नहीं लगेगा। जैसे आप एक किसी गार्ड के पास चले गए, उसको आइडिया नहीं है, उसको ये पता है कि सीटी लिखा जाता है, तो वो सीटी लिख देगा, चाहे सीटी की जरूरत है चाहे सीटी स्कैन की जरूरत नहीं, तो वो उसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसने वो बेसिस नहीं
इवॉल्व किया और उसने वो पढ़ाई उस तरीके से नहीं करी, किस चीज के लिए किस टेस्ट की जरूरत है, किस किस हिस्से के किस चीज के लिए क्या करना है, वो नहीं पढ़ा। बस एक वो पढ़ा कि मोटे मोटे तौर पे ये सब लोग करा। जैसे हमारे पास मरीज आते हैं, चाहे पढ़ा लिखा नहीं, कहेगा सिटी स्कैन करा दो, घुसते कमरे में घुसते ये नहीं बताएगा कि मरीज की दिक्कत क्या है आजकल, वो ये पूछते हो कोई आते हैं कि सिटी स्कैन होता है, तो वो बच्चे का हो या किसी का भी हो, वो जरूर कहेंगे कि आप इसको ये करा, लेकिन उसकी आवश्यकता है या नहीं आवश्यकता है, यही एक डॉक्टरी तौर पे हमें समझना होता है, और हम उसी के हिसाब से कार्य करते हैं और इसी के हिसाब से चलते हैं कि हाँ ये चीज हमने करी, इसको हमने पाया, जब हमने एग्जामिन करा तो ये कमी पाई और उसके हिसाब से ये टेस्ट होगा और उसकी रोकथाम के लिए ये होगा और उसके इलाज के लिए ये होगा। तो ये जो चीज है, ये जो आज की क्लास जो मैडम ने ली, वो बहुत ही बहुमूल्य क्लास है, और अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग पे करेंगे तो आप उसको प्लीज रिवाइज करिए, तभी बार बार, तभी आप आगे के सभी जो पाठ्य हैं वो अच्छे से समझ पाए। संक्षिप्त में 2 कमेंट दूंगी। तो मैडम ने बात की और पीछे मैडम ने भी बात की, संवाद स्थापित तब होता है, संवाद तब स्थापित होता है जब हमारी नियत है कि दूसरे को हमारी बात समझ में आए। तो जो बड़ी बड़ी आजकल बात होती है, पीडागोजी, टीचिंग लर्निंग मेथड्स, TLM, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन अगर हम अपनी ईगो में रह जाएंगे तो हमारा स्टूडेंट्स का उनके आगे क्लाइंट्स के साथ संवाद ही स्थापित नहीं होगा। तो सरल करना मुश्किल है, लेकिन सरल करना जरूरी आवश्यक है ना। तो मुश्किल है, आसान नहीं है इसको इतना सिंप्लीफाई करना, लेकिन जरूरी है। दूसरी बात जो सुखिन बहुत अच्छी बोली, सोशल कनेक्टेडनेस। आप कोविड याद कीजिए, जब सोशली डिस्कनेक्टेड थे तो सबको कुछ कुछ साइकोलॉजिकल पीड़ा हो रही थी ना, और ऐसा हमारे डिसेबल बच्चों के साथ होता है, क्योंकि हम और बच्चों के साथ उन्हें सहयोग नहीं मिलता, डिस्क्रिमिनेशन है, मरीज के साथ, उसके माँ बाप के साथ, वो किसी शादी ब्याह में नहीं जाते, वो मॉल में नहीं जाते, वो ट्रैवल नहीं करते, तो आइसोलेशन में रह के हम अपने परेशान हो गए। अगर बच्चा में कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसको बंद करके नहीं रखना है, कोई बात नहीं, डिसेबिलिटी है तो क्या होगा, कोई भी परफेक्ट नहीं है, 1 in 6 तो ब्रेन वाली है, बाकियों को और कोई डिसेबिलिटी है, कुछ डिसेबिलिटी दिखती है, कुछ नहीं दिखती, साइलेंट होती है। तो घर के अंदर बंद करना, तो या परिवार के लोगों का बात ना करना और सोचना कि नहीं नहीं इसको ऐसे अकेला छोड़ दो, वो बहुत ही घातक है। और जो बच्चे सोशली स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में पलते बढ़ते हैं, जो यहाँ पे मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी और सोशल वर्क से जुड़े हैं, वो ये बात अच्छे समझते हैं कि आप सोशली इंटीग्रेट कर दो बच्चे में, उसमें भी फर्क आता है, सिर्फ दवाई से नहीं आता। क्या होता है, सबस्ट्रेट दिमाग के कनेक्शन बदलते हैं, बनते हैं, डाइवर्सिफाई होते हैं। गुड आफ्टरनून मैम, एंड मैम मैं श्रुति मैम आपको मैं बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ मोटिवेशन देने के लिए कि सिर्फ हम ही नहीं आप भी भूल जाते हैं, आपको भी रिकॉल करना पड़ता है। ब्रेन आपने पढ़ा है इतने डिटेल में, और मैम ब्रेन मेरा बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे को डर बहुत लगता है उससे। लेकिन मैम ने आज जिस तरह से समझाया है, मेरे को लगता है नहीं हम सब समझ सकते हैं, हम इसको सब चीज को हमें भी ये समझ आ सकता है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, वी हैव साइकोलॉजिस्ट, और मैं एक निमेश सर के क्वेश्चन का भी आंसर करना चाहती हूँ। सर ने पहले पूछा था कि हम 3 दिन के बाद मिलना चाहते हैं या नहीं, मैम आपके साथ तो जरूर, और हमें तो एक ट्रेनिंग, हमें कोर्स की जरूरत है जो सिर्फ ब्रेन के बारे में ही डिस्कस करे, जिसमें हम डिटेल में उसके बारे में, फंक्शनिंग के बारे में समझ पाए। और आज आपके लेक्चर के बाद इतना कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं समझ आ सकता है, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ सकता। मैम जो आपने लैंग्वेज यूज करी है, जिस तरह से आपने समझाया, मैम कमेंडेबल, थैंक यू सो मच। हम 10वीं 12वीं कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ब्रेन नहीं समझ सकते, ऐसा नहीं हो सकता, इतना हुआ बना दिया है ब्रेन। एमबीबीएस के बच्चे भी कहते हैं मैम ब्रेन वाला केस मत देना, सीरियस केस मत देना। This time, I'm working on dementia. Actually, I'm from Directly International. My question is dementia treatable or preventable? Both.
How? Okay. So now we have to understand dementia एक syndrome है, इसके बहुत टाइप के causes हैं, है ना? तो कुछ हमारे causes हैं न्यूरोडीजेनरेटिव, है ना? और कुछ causes हमारे रिवर्सिबल डिमेंशियाज के भी हैं। तो जितने रिवर्सिबल डिमेंशियाज हैं, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड हो या नॉन प्रेशर हाइड्रोकेफेलस से रिलेटेड हो या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो, वो तो कंप्लीटली रिवर्सिबल है, कंप्लीटली क्योर्ड है। Risk factors we can maintain. Look, let me complete. तो रिवर्सिबल डिमेंशिया तो पूरे क्योर हो जाएंगे, है ना? फिर दूसरे टाइप की डिमेंशिया है जो कंप्लीटली रिवर्सिबल है, जैसे अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है। इसमें भी आप उसका प्रोग्रेशन डिले कर सकते हैं, है ना? और ऐसा नहीं है कि आप इसको लाइफस्टाइल, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, सोशल स्टिमुलेशन, यू कैन इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू कैन इवन मेंटेन कॉग्निशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना? तो ये वाले में ऐसा हम क्योर नहीं देख रहे, बट हम इम्प्रूव लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ठीक है? देन है प्रिवेंशन। जेनेटिक फैक्टर्स तो प्रिवेंट नहीं हो सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द ये लैंडसेट में 2021 में भी निकला that most of the factors apart from genetics are preventable. आपके जितना hypertension, diabetes, dyslipidemias है, head injury है, आप हेलमेट पहन के निकलिए, अपने ब्रेन का थोड़ा लुक आफ्टर कीजिए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना कीजिए, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ऑल दीज आर एंटायरली प्रिवेंटेबल। इंडिया में थैंकफुली जो अल्जाइमर्स की जीन है ApoE4E4, ये कम, ये एम्स की स्टडी हुई थी बल्लभगढ़ में। हमारे पास इतना अल्जाइमर्स नहीं है, हमारे पास ज्यादा वैस्कुलर है। वैस्कुलर हमारा हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल फैक्टर से होता है। और ये फैक्टर देयर इज रिसर्च फ्रॉम स्वीडन, 20 ईयर्स तक ऑपरेट करते हैं तब ब्रेन प्रेशर होता है। तो अगर आप मिड लाइफ में, 30s में, 40s में, 50s में, यू कैन स्टिल प्रिवेंट यू नो इंसिडेंट्स ऑफ वैस्कुलर डिमेंशिया। तो प्रिवेंटेबल भी है। डिजनरेशन तो चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे हंटिंगटन हो, चाहे अल्जाइमर्स हो, उससे प्रिवेंट नहीं हो सकता ना, लेकिन उसमें भी हम इंटरवीन करके क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस रिस्क रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन, है ना? वी कैन हेल्प देम विद बैलेंस इश्यूज। तो बहुत सारी थेरेपीज इन्वॉल्व है। एंड मॉडर्न साइंस में हर चीज में हम क्योर नहीं देखते, हम डायबिटीज में भी क्योर नहीं देखते ना, लेकिन ब्रेन साइंस में हमेशा क्योर की बात करते हैं। हम हाइपरटेंशन में कभी क्योर की बात नहीं करते, हम कहते हैं एक गोली खानी पड़ेगी, 2 गोली खानी पड़ेगी, नमक कम करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग। लेकिन अगर हम कहें कि ये स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, दवाई खानी पड़ेगी, कब तक? तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करने की बात है। बट अ लॉट ऑफ देम आर कंप्लीटली रिवर्सिबल। वी हैव हैड वंडरफुल सक्सेस स्टोरीज आल्सो। अब तो जो हमारा स्टाफ है वो कहता है कि पेशेंट ना व्हीलचेयर में आता है, तो मैडम पता नहीं इलाज करती है, मैडम बातें बहुत करती है पेशेंट से, उसके बाद पेशेंट ना चलने लगता है। एक बार गिर जाते हैं, फैमिली मेंबर जबरदस्ती व्हीलचेयर में बैठा देते हैं कि दोबारा मत गिर जाना, फ्रैक्चर हो जाएगा। दे लूज ऑल देयर कॉन्फिडेंस। एक बार दे हैव इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, या फिर घर से बाहर ले जाना ही बंद कर देते हैं, घर में एक मेड के साथ छोड़ देते हैं, मेड भी अपने मोबाइल पे लगी होती है, और भी सही कि नहीं घर से बाहर लेके जाओ, बात करो, रीगेन कॉन्फिडेंस। And actually in rural areas, the public is not aware about dementia. So there are a lot of complications for their treatment. Actually, I'm working in Palwan side, the same Palagad project. I'm handling that. I'm the site in charge there. Wonderful. So this is the major problem. Actually, dementia के लिए aware ही नहीं है लोग, क्योंकि they need actually family counseling at home. We have developed cognitive stimulation therapy for North Indian population by doing research, original research in Najafgarh and in urban parts of Delhi. We'll be very happy to collaborate. We can train carers, we can train community volunteers to deliver a low cost, community owned kind of initiative. We can do that. Thank you. Yeah, please. Hello everyone. I'm a computer science student. I'm going to the hello. I'm working as an assistant behavior scientist at BMI, working under Dr. Smita. She's a DP. And आज के सेशन के बाद में हम लोग बिहेवियर की फंक्शंस करते हैं। हम पेरेंट्स को बताते हैं किस बिहेवियर
कैसे फंक्शन अभी जो सेशन हुआ उनके बाद मुझे पता चला कि हाँ जो हम ब्रेन फंक्शन कर रहे हैं उसके पहले हमें ब्रेन की फंक्शन we need to understand that how brain is working and how behavior is occurring there. Thank you so much. आपने बहुत सुंदर मुझे सिखाया. I want to say, perhaps होते हैं जैसे एनालिस्ट स्कैन देखते हैं, स्कैन देखते हैं. What scientific explanation they give what I have observed as a empiric clinical psychology training is that they tell कि उनकी ब्रेन की दिमाग की नसें बहुत कमजोर है. तो ये सुन के वो जो पेशेंट्स के पेरेंट्स होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो डर जाते हैं. तो इतने जो मामले थे अच्छे से समझाया हमें. तो instead of giving this explanation, we can always simplify the complex functioning to the patient and the caregiver. तो इसी के लिए आपको मैडम का लेक्चर फिर सुनना पड़ेगा, क्योंकि इनके लेक्चर में जो है, अगर मैं अभी इस सबका क्विज लूं तो उसमें से फिर पता चलेगा कि किस किस को याद है. तो क्योंकि ये चीजें थोड़ा जो है, एक चीज है समझाना, एक चीज है समझना और एक है याद करना. तो आज मैडम ने बहुत ही सिंपल तरीके से और एक तरीके से आपको समझाई बातें, लेकिन इसमें तथ्य ये है कि इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है. और जहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे बहुत सारे चीजें आप बहुत सारे आपको स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं कि भाई फला 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 फला, तो वो आपको याद करना पड़ेगा, उसको आपको बार बार कंठस्थ करना पड़ेगा. जैसे आपने कविता पढ़ी, आपको समझ आ, आपको किसी ने कविता पढ़ी, आपने आपको उसको समझाया गया, आपको समझ आ, लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आप उसको बिना देखे बोल सकते हैं. तो इनकी जो आज की क्लास है, मैं सभी से फिर से अनुरोध करूंगी सेशन एंड करते हुए कि उसको प्लीज, आप लोगों ने फोटोज लिए फोन से, बहुत अच्छी बात है, उसको स्लाइड्स को आप प्लीज बार बार दोहराइए, बार बार याद करिए, क्योंकि जब तक आप उसको इस तरीके से याद करिए कि बिना किताब के आप उसको कंठस्थ कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, सुना सकते हैं, तभी आपको आगे का जो सर का प्रोग्राम है वो पूरा ठीक से समझ में आएगा. Knowledge domain, practice not repetition is required. very very important. हम लोग बात कर रहे हैं रेलेवेंस ऑफ ब्रेन साइंस, और जब इसके बारे में नहीं मालूम होगा तो आगे साइंस के क्या बात करेंगे. तो द टॉपिक वाज सो इजी, इतनी अच्छी चीज, मतलब हमको जो एक एक ब्रेन का पार्ट है, वो कहाँ कौन कौन से हिस्से को कंट्रोल करता है, कौन कौन से हिस्से में एक्टिंग करता है, तो वो बता. तो ये रेलेवेंस एडवोकेसी के अंदर, एडवोकेसी एंड इंक्लूजन के अंदर हम इसको बहुत तरीके से अप्लाई कर पाएंगे. तो थैंक यू वेरी मच the organizer for keeping this topic, and thank you very much madam, इतना आसान तरीके से आपने हमारे को बताया. Thank you. Last one more thing. Can you please share this PPT on Monolithic WhatsApp group? There is a no WhatsApp group. Okay, so everyone has registered on the e-answer, right? Yeah. So this is the course module, online course module. Everything will be there. So I have one comment. और बहुत ही अच्छा कमेंट हमारे जेपीसी का सर है, जो रिहाब काउंसिल का सारा मतलब स्टार्ट हुआ एट एन ओन साइड फ्रॉम द एनआईएमएच. लगता है कि ये हम लोग के कोर्स में इसलिए अभी तक नहीं आया कि एमबीबीएस वाले के लिए थोड़ा सा टफ है, तो पारा वाले के लिए तो और भी टफ होगा. तो हम लोगों के भी दिमाग में नहीं आया, तो ये थोड़ा सा आपका ब्रेन साइंस थोड़ा टफ था, लेकिन आज के बाद तो लगता है कि पूरी तरह से ये पढ़ा सकते हैं. ये जो आपने बताया इतना तो है, तुरंत कर सकते हैं. ये तो तुरंत साइंस के सिलेबस नहीं, सभी लोग मैंने पिछले वाले में लिख के रखा था कि जो हमारा लेक्चर है उसमें ये रिकमेंडेशन टू रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इनको हमारे यहाँ से जाना चाहिए कि भाई वी शुड इंक्लूड दिस टॉपिक, और एजुकेशन डिपार्टमेंट को जाना चाहिए, एंड द कॉपी ऑफ दैट टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. तो शायद कुछ एक्शन जरूरी होगा.
मैं आपको बताना चाहूंगी कि सीबीएसई बोर्ड में तो सिलेबस में ये बायोलॉजी सब्जेक्ट 10th क्लास तक ही बच्चों को आजकल इसके ये जो मैडम ने पढ़ाया वो सब पढ़ाया जा चुका है। वो सब आजकल की जो लेटेस्ट बुक्स हैं उसमें साफ इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो 9th में बायोलॉजी साइंस कंपलसरी सब्जेक्ट है और साइंस कंपलसरी सब्जेक्ट में 9th-10th में ही बायोलॉजी की किताब 9th-10th की उठाएंगे तो ये सब कुछ मिल जाएगा। बट ये वही वाली बात है जो जैसे मैडम ने कहा कि हम उसकी तरफ गौर नहीं फरमाते क्योंकि वो एग्जाम में एक चॉइस का क्वेश्चन होता है तो उसको हम ध्यान नहीं देते। तो वो 9वीं 10वीं की जो साइंस की किताब है एनसीईआरटी की वो अवेलेबल है, उसमें ये सब कुछ है, उसमें है सब कुछ। नवीं 10वीं में तो पता नहीं था कि मेंटल हेल्थ साइंस में जाना है तो ध्यान से नहीं दिया लेकिन अब आते हैं तो इसी फील्ड में काम करना है, चाहे क्लिनिकल वर्क करना है, चाहे एडवोकेसी करनी है, अब तो ये सारे कंसेप्ट करने ही है ना, अब चॉइस नहीं है। और ये जितना फंडामेंटल है ये आप घर जाइए पढ़ लीजिए, नेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, फिर पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए, सोचना शुरू कीजिए मेरा पेशेंट है इसको लेफ्ट हैंड पैरालिसिस, इसकी कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, इसको ये पेशेंट है इसका कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये पेशेंट है गिर जाता है ना। तो जब तक आप पेशेंट के साथ एरिया ऑफ द ब्रेन लिंक नहीं करेंगे तो ये कभी याद नहीं होगा, ये सब एक थ्योरी लेक्चर और फिर ये भूल जाएगा। तो इसको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, और गलत भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, किसी और से पूछ लो कि हमें ये लग रहा है क्या हो सकता है, अब वो सिटी का पेशेंट है क्या हो सकता है ना बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व है ना। तो अब बेसल गैंग्लिया फिर कहाँ है, दोबारा नेट पे जाओ देखो बेसल गैंग्लिया था कहाँ। तो जब तक आपकी विजुअल ऑडिटरी सारी मेमोरीज इंटीग्रेट नहीं होंगी तो फिर ये वर्ड्स रह जाएंगे, तो यू शुड प्रैक्टिस इट। मैंने बताया कि पीटी विल बी ऑन द एंड ये पब्लिक रिसोर्सेज से ही ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कुछ इन्वेंट किया है, पर मेरी जो डिलीवरी है वो सिंप्लीफाइड है ना, जो मैं कंसेप्ट बता रही हूँ जैसे बता रही हूँ वो आर्ट है, बाकी तो ये तो सबके पास है। तो you can take the video on our social media as well as they will upload that video. Thank you. मैं आपको सिर्फ थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आई विश कि सारे प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर आपकी तरह हो तो शायद आजकल सुनने को मिल रहा है टाइटल सुनने को मिल रहा है न्यूज़, तो वो शायद हम कम कर सकें। थैंक यू सो मच। वो भी एक अलग ही मुद्दा है। Thank you both ladies. इससे अच्छा सौदा क्या हो सकता है कि आपके जो 20-22 साल पहले पुराने साथी आज सीनियर मोस्ट इफेक्टिव पब्लिक ओरिएंटेड प्रोफेसर पर 2-4 मुद्दे ये बातें हो रही थी। सबसे पहले आई एम श्योर both प्रोफेसर्स my long time colleagues will agree जो मेरी कोशिश रही है and I'm sure इन दोनों साथियों की है, डॉक्टर मनोज जैसे हमारे साथियों की है, वो चाहिए ऊपर बैठो। और ये संदर्भ रखता है जो बात हो रही थी आखिर में सर कट रहा है, जैसे डॉक्टर मीना ने बहुत प्रामाणिकता से बताया ये सारा मटेरियल तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। ओके, आप my emphasis as a trainer and all of these colleagues our emphasis has been and many of your teachers you are saying the emphasis should be not on the what of learning content। आजकल गूगल की जमाने में कोई मुश्किल नहीं है, बट हाउ टू लर्न और हाउ टू डिलीवर एक बात। दूसरा जो इमोशनल ब्लॉक्स हैं पॉजिटिव या नेगेटिव उनको हम दूर कर सकें। तो जैसे कहा गया आज का कंटेंट तो आपको याद रहेगा ही, लेकिन कंटेंट याद ना रहे तो भी फिक्र नहीं करिएगा। जैसे आपसे बहुत सारे साथियों ने कहा अगर वो हुआ खत्म हो गया, अगर वो विलिंगनेस थोड़ी बढ़ी, अगर वो सेंसिटिविटी बढ़ी कि अच्छा ब्रेन के बारे में सीखते हैं तो पर्पस सर्व है। दैट्स द मेजर पार्ट and that both these ladies delivered completely। एक दो मुद्दे जो उठे आई मस्ट से पहली बात जो नशे कमजोर होने की बात हुई ना, मुझे इसलिए भी याद आ रहा है कि जो डॉक्टर अनिल नहीं नॉट डॉक्टर
हमारे भाई अली जोशी और हम बात कर रहे थे प्रीवियस सेशन में, डीमिस्टिफाई, सिंप्लीफाई। लेकिन कई बार सरकारी डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर अपनी नाकाबिलियत में या जल्दबाजी में या lack of proper attitude and respect for the client, they oversimplify to the extent of giving wrong facts. नसें कमजोर होने जैसा कोई मतलब एक्सेप्ट फॉर स्ट्रोक एंड पैरालिसिस, राइट, तो इससे भी बचे। और आप लोग तो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, अब कानूनी बिल भी हो गया, एक तो वो समझे। एक तो और मुझे सूझते हैं वो ये है, मैं और रियलाइज कर रहा हूँ, आई डिडंट रियलाइज दिस बट टुडे आई एम रियलाइजिंग मोर, brain science is actually becoming very, very complex, impossible even for a neuroscientist to understand and remember everything. तो जरूरत जो आज हम बात कर रहे हैं इन दिनों में वो और ज्यादा है। The more complex the science becomes, the more difficult it is going to be for rehab professionals or disability activists to understand and remember that. तो अगर टाइम पहले भी गुजर गया है तो अब और ज्यादा अर्जेंट टाइम है कि हम उस कॉम्प्लेक्स साइंस को सिंपल भाषा में एक दूसरे से और हमारे दूसरे साथियों से शेयर कर सके। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स व्हाटएवर एल्स। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, आप लंच के लिए ब्रेक करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट सेशन है 2:30 बजे से 2:30 साढ़े 3 तक, नचिकेता देसाई, वन ऑफ आवर कलीग्स फ्रॉम गुजरात, is actually going to continue the tradition that Ramana Chandra has said. नेक्स्ट लेवल जो है बेसिक ब्रेन फंक्शनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईडीडी। आईडीडी में क्या क्या होता है ब्रेन फंक्शनिंग और कैसे होता है, जो उसमें से हम बात कर रहे हैं, वो आई एम श्योर डॉक्टर नचिकेता विल एक्सप्लेन टू इवन बेटर। वी टू चेयरपर्सन्स फॉर दैट, वन इन पर्सन डॉक्टर ओमसाई प्रोफेसर फ्रॉम Nilgiri, and a long time experienced person in the field that we are talking about, and very senior professor from Mumbai, Dr. Shwangi Parkar online. All three of them are already available. So lunch के बाद please हो सके तो let's gather by 2:20 or 2:30. Big thank you, really. Yeah. Both of them, Thanks. right? Sir, yes, please. Yeah. तो रोटी विभाग रख के दे दें, रोटी खाने पे जल्दी आ जाए, आर पीपल ऑलरेडी ऑन दैट, यू नो 12 हमारे जो रिचुअल पर्सन है ये लाइट बंद करेंगे, ठीक है, एक वहां से फॉक्स लाइट लगाएंगे। दिमाग में